on the portal, for example, Amazon, Flipkart, or for that matter, Snapdeal, or any other portal, if I am a buyer, I am a buyer outside a particular state, your goods will should not be shown to me, or I cannot select them. That is one option which e-commerce portal operators have to make sure. Otherwise, the orders will be lined up and then thereafter they will be cancelled. Or if they are not cancelled, by mistake, these composition suppliers may supply outside the state and their composition will become at risk. So if you have any client who is a composition supplier, even though it looks good, it looks very comfortable, ki yes, you can now supply through e-commerce operator. But in my very humble opinion, the kind of checks and balances which the composition supplier has to maintain are sensitive. If he makes one single supply outside the state through e-commerce operator, his composition will be under challenge by the department, and that can have grave consequences, and those consequences will come after 2 years. Second, up to 1st of October 2022, I'm talking about last year, there was no mechanism whereby the government could enforce the collection of ITC for non-payment. If you remember, I had taken this particular topic in detail some time back. If I have not made a payment to my supplier for 180 days, I am supposed to reverse my ITC 180 days from the date of the invoice of the supplier. I am supposed to reverse my ITC under section 16, subsection 2, second proviso, read with rule 37. However, up to 1st October 2022, the rule specified form GSTR 2 as the form in which that particular amount was supposed to be added to the output liability. Now, that particular form, GSTR 2, never came into force, and therefore, up to October 1, 2022, I had no mechanism to reverse that particular ITC where I have not made payment to my supplier within 180 days. So, effectively, the second proviso to 16.2 was ineffective. Rule 37 was ineffective. The government amended the rule on 1st of October 2022 to replace form GSTR 2 with GSTR 3B. And now there is a form where you can pay that particular amount, but by adding to your output. Now, again, the government has amended section 2, section 16, subsection 2, whereby they have now removed, in place of output adding to the output supply, they now want you to pay that particular ITC which has been availed and for which payment has not been made to the supplier within 180 days. You have now to pay that particular amount, and that is not in form of adding to the output. Now, my dear sir, what was the benefit in adding to the output? If you're adding something to your output supply, you can pay that particular amount by either ITC, because that constitutes your output tax, or you can pay it by electronic cash ledger. Now the term has been removed. Now it has been saying you are required to pay the amount, not adding to your output. Will it be having any implication in terms of payment by ITC or not? Sir, in my humble opinion, you would still have both the option: pay by electronic cash ledger or pay by electronic credit ledger. But the more important part, the one interest which government wants to effect is from day one on this particular supply. By amending this particular section, government want to enforce that particular interest which you on the amount of ITC which you have taken under section 50. So यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट के कारण गवर्नमेंट ने ये अमेंड करा है सेक्शन, so that the interest can be collected from the person from the very first day from where the ITC was taken, and not from the day when it is added to the output. Because if it is added to the output after 180 days, the government cannot collect the tax from day one. I hope I'm very clear on this, sir. So this is again a legal battle. In my humble opinion, still the interest cannot be taken from day one. It will be taken from the day when it is required to be added to my liability in terms of reversing this particular ITC. Third, coming on to the third amendment, CSR activities, section 17, subsection 5, clause FA has been inserted from 1st October 2023, whereby if you are taking any ITC that in respect of goods or services or both,
which is received and used for or in relation to obligations which are under corporate social responsibility as referred to under section 135 of Companies Act, that particular ITC will not be available to you. So a specific addition has been made from 1st October 2023. Question comes, sir, can that means that we can take this credit prior to that date? In my humble opinion, yes, sir. You can take that particular credit prior, because once, unless this amendment was there, this insertion was there in terms of 17.5 FA, there was no provision which was barring this particular ITC. Also, bringing in a negative section means that that particular credit was earlier allowed. So that particular ITC for prior period can be availed by the taxpayer. Next, sir. Under section 23, amendment was made that uh, notwithstanding 22 and 24. So 23 allows you not to take the registration if you are only dealing in exempted supply of goods or services. Does it have an overriding effect over 22 and 24? For that particular purpose, an amendment has been made that if a person is dealing purely in exempted supply, that particular person is not required to take the registration on account of any of the items of 24 reverse charge more particularly. And to overcome this particular handicap, the word notwithstanding was added to section 23, notwithstanding anything contained in 22 or 24. And now 24 is overriding 22 and 24. So if you are dealing purely in exempted supply, you're not supposed to take registration under 22 or 24 for that matter. One more important, the government wanted to curtail the period for which you can file your return. If you speak about any period prior to 1st October, I can file my return which was relating to 17-18 today also. There has been multiple extensions given by government time to time. There has been multiple schemes or relief given by government from time to time. But now I think the government is in the let's not say they are no longer wanting to extend any further dates in terms of giving relief or filing of any returns for past period. Therefore, they have brought in a restriction that no person will be allowed to file a return after the expiry of a period. Sir, I think Batra sir has joined. No. I thought he's wanted to sing something. No, please. It is somebody else. Returns under GST regime can now not be filed after the period of expiry of 3 years from the due date of furnishing these returns. So if we are talking about July 2017, 3 years from the due date will be somewhere August 2021. And therefore, my dear sir, now you cannot file the return for that particular period. What is live now is 2023 October. So whatever you can file is for latest for September 2020. So you can file your returns now only for a period after or of September 2020 in this particular month, and this period will keep on reducing. So this restriction has been brought in section 37, 39, 44. So annual return has also been restricted, 52, TDS, and so on. So this 3-year period, one has to be very sensitive that now there is a embargo, there is a restriction, and no person will be able to now file returns for previous period. Again, there is one concept of provisional refund. That particular concept, by amending section 54(6), the government has removed the concept of provisional refund, because earlier the amount of input tax which was provisionally accepted, a refund can be taken, and using that particular ITC, the refund of the ITC taken was paid in cash by the government. Now that particular acceptance, provisional acceptance, has been deleted, and therefore once the officer now accepts, then only the refund will be granted to the person. And therefore, due to this particular application, in my humble opinion, the automatic refunds will now not be able to move to the taxpayer.
which was earlier coming into his bank accounts. So this one important amendment is for all the exporters. Sir, there are certain penalties which has been brought in for wrong filing of returns by e-commerce operator. We are leaving that. In terms of some monetary limits for prosecution, we know it has been increased. Gaurav ji, can you repeat this Sir, last one, provisional refund wala? sir, under section 54(6), section 54, subsection 6, earlier the refunds were allowed from the provisionally accepted ITC. Let me read out the provision for you. Notwithstanding anything contained in subsection 5, the proper officer may, in case of any claim of refund on account of zero-rated supply of goods or services or both, made by a registered person other than such category of registered person as may be notified, refund on a provisional basis 90% of the total amount so claimed, excluding the amount of ITC provisionally accepted, in such manner and subject to such condition, limitation, and safeguard as may be prescribed, and thereafter make an order under subsection 5 for final settlement. So there was a amount of ITC provisionally accepted which was coming to all the exporters in terms of refund. So now that particular deletion is there. That particular acceptance of provisional ITC has gone. So there is now no provisional acceptance of ITC. That provision is done away with. The ITC need to be accepted by the officer in order to grant the refund. And therefore, sir, this particular restriction will lead to issuance of a refund only after acceptance by the proper officer. And we know the entire process because we have seen that process in LUT. So this one change has been brought in. I was onto the increase in the prosecution limit from 1 CR to 2 CR. Internally, every one of us know that that particular limit was 5 CR. The government was not making arrest below 5 CR. However, it was very surprising that by saying that we are increasing the limit from 1 CR to 2 CR, we are actually relieving or we are relaxing the limits for prosecution. I think the limits which were accepted as 5 CR now should be seen as reduced to 2 CR. So this is something which is, I'll not say of concern, because ultimately any person who was actually evading taxes, or for that matter, he was in connivance in terms of fake invoicing, was particularly involved in prosecution cases. So in those particular cases, most of the cases only were linked to this one, fake invoicing. So in the coming days, since the limit has now been reduced to 2 CR, we might see some genuine taxpayers genuine taxpayers who have committed grave errors in terms of duplicate ITC. And this is practical. Someone might have taken duplicate ITC because of the matching. So earlier month, his 2B was not matching, but accountant inadvertently took it. Next month, when 2B matched, again the ITC was taken. So these kinds of cases we have seen. And 2 crore is not a big limit when you're talking about some big taxpayers. I think rather than an absolute limit, this should be linked to a percentage of his total ITC. So let us say 5 or 7% of his ITC or 2 CR, whichever is higher. But right now the limit is a fixed monetary limit, 2 crore की limit है, जिसके ऊपर government ने कहा है कि भाई the arrest can happen, and this limit will also not be seen or not be this limit will not be applicable where there is a case of a continuous offender, or for that matter a person who is into fake invoicing. So you also have to look into this further. Sir, earlier in ocean freight, there was a question which was answered by Honorable Supreme Court in the case of Mohit Minerals, whether under reverse charge an importer is required to pay tax, GST, on the ocean freight which is included as part of his CIF value of the goods imported. The Honorable Supreme Court said, no, this is a composite supply. Please mark my word, this is a composite supply of import of goods.
So where this composite supply is only applicable when you are importing the goods as CIF. If you are importing the goods as FOB, there are two independent contracts, one for the import of goods and the other for transportation services. And therefore, this particular decision will not save the FOB cases per se, in my humble opinion. Accordingly, government amended notification number 10, IGST 2017 rate, whereby the entry relating to the tax payable by the importer has been deleted. Now, this is only to align the notification with the decision of Honorable Supreme Court. But my dear sir, please keep note of this. This particular entry will only save the CIF imports. If there are FOB imports and you are paying the transportation cost separately, whether to the shipping line or freight forwarder or to a foreign party, that particular amount will still be exigible to GST. Very interestingly, under section 13, another amendment has been brought in. Earlier, the place of supply for transportation of goods, in case of a person located in India providing services to a person outside India, it was linked to the destination of goods. So if the goods were going out of the country, the place of supply was out of the country. If the goods were being imported into the country, the place of supply was within India. So, for example, I am a freight forwarder, I am a CNF agent. I have got a contract from the freight forwarder located in England for shipment of goods to India. In that particular case, the transportation of goods, since it was happening to a destination in India, the place of supply becomes India. And therefore, the Indian transport service provider, the CNF agent, or for that matter, the freight forwarder, used to charge GST on such particular transaction. I can tell you, for the past period, there are many CHA agents, CNF agents, freight forwarders who have committed a grave error that they have provided the services of transportation of goods from outside India to India. And that particular service, when provided to a foreign party, those particular people have provided that particular service under LUT and they have not charged tax. I'm talking about period prior to 1st of October 2023. Sir, whatever happened in past, that liability still remains, but for future, government has rightfully deleted the subsection under section 13, and now the place of supply in case of transportation of goods is linked to the location of the recipient. So now if my recipient is located outside India, whether the goods are coming into India or not, I am the service provider for transportation of goods, it will qualify as export of service, which it was not happening in cases where the goods were being imported in India prior to 1st of October 2023. And I'm talking about cases where the supplier or recipient was located outside India, either of them. If both of them are located in India, then that was guided by section 12, subsection 8. In section 12, subsection 8 of IGST Act, again there is an amendment. What amendment it is, sir? A proviso was added on 1st of February 2019, whereby the place of supply in case of transportation of goods where the supplier and the recipient both are located in the taxable territory India, the place of supply was presumed, or it was said that when your goods are going outside India, the place of supply will be outside India. Now, in this particular case, a lot of hue and cry was there. Government came out with a clarification that even in such cases, the ITC will be available to the recipient. Now, government, after understanding the entire issue, has deleted this proviso with effect from 1st of October 2023. And therefore, in case of any two residents, the place of supply shall be the location of recipient in case of transportation of goods, whether to India, outside India, or within India. So all those particular cases have now been streamlined. That proviso, which came in 2019, has now been deleted from section 12, subsection 8 of IGST Act. Sir, high sea sale merchant trading with effect from 1st of October 2023, an amendment which was brought in 2019 again in schedule 3 कि हाई सी सेल और मर्चेंट ट्रेडिंग को आपका
सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं माना जाएगा, that particular amendment has been made retrospective from 1st of July. I think this is a very welcome step. जो भी थोड़ी बहुत litigation इस point पे चल रही थी, though not many litigations we have seen rising on this point. If you are making a high sea sale or a merchant trading outside India to outside India, that particular transaction is kept outside the purview of GST retrospectively. It is put into Schedule 3 from 1st of July 2017. And therefore, a lot of issues will be ironed out because of this. Sir, I think these are the major amendments. There were some other amendments, but I'm not going into them. Major amendments I have covered. Now, coming on to the topic, which was asked specifically, हम सबको पता है 30 सितंबर 28, 29, 30 state governments across India, more particularly, let me restrict myself to Delhi. A lot of notices under Section 73 of the GST Act were issued by the state GST department, not center, state. किस किस पॉइंट पे इशू हुए थे सर? अगर आपका 3B2A में गैप है, आपका 3B1 में गैप है, आपने एग्जेम्प्टेड सप्लाई दिखाई है, चाहे 9 में दिखाई, चाहे आपने 3B में दिखाई, और उसका कॉरस्पॉन्डिंग आईटीसी रिवर्सल शॉर्ट है, उसके ऊपर इशू हुआ है. आपके कोई क्रेडिट्स जो सामने वाली पार्टी ने इनएडमिसिबल क्रेडिट्स की कैटेगरी में रिपोर्ट करे थे, तो फॉर एग्जांपल यू हैव परचेज्ड गुड्स or services from a person who is registered under works contract services. Again, notice has been issued without understanding things that why this credit should not be disallowed to you. So a lot of notices has been issued on these particular points and maybe 2-3 more. All the notices are in a particular manner. They are standard notices. They are issued without application of mind, just on the basis of computer generated data, and those notices has also been issued by computer itself. If you ask an officer how have you computed, I am 100% sure ऑफिसर को नहीं पता ये नोटिस कैसे इशू कंप्यूट हुआ है. वो कहेगा आप भी बैठो मैं भी बैठता हूं, दोनों बैठ के समझते हैं कि ये नोटिस कैसे इशू हुआ है. नाउ सर प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज not a ASMT 10. It is not a information which is being called on noticing a discrepancy under Section 61. It is a show cause notice that why this particular demand should not be recovered from you. And these demands are particularly on the grounds which I have said. Now, question is, sir, how to proceed in these particular cases? Number one, there cannot be a straight jacket formula for all notices. Number two, please note, there can be 2 scenarios, 3 scenarios rather. First, आपको ASMT 10 इशू हुआ था 2 साल पहले या 1 साल पहले या 6 महीने पहले. उस नोटिस के अगेंस्ट आपने ASMT 11 में जवाब दिया या नहीं दिया. 2 सिचुएशन हो सकती है. अगर नहीं दिया तो फिर ASMT 10 की इंक्वायरी आपने एड्रेस नहीं करी, शो कॉज का रिप्लाई आप प्रॉपरली दीजिए. मैं आपको उसके अंदर कोई भी सबमिशन अलग से नहीं कहूंगा कि डालनी चाहिए, क्योंकि इंक्वायरी ASMT का आपने पार्टिसिपेट नहीं करा. अगर आपने रिप्लाई दिया ASMT 10 का, फिर 2 सिचुएशन खड़ी होती है. क्या आपको ASMT 12 इशू हुआ था? अगर ASMT 12 इशू हुआ है तो सर उन केसेस में भी ये नोटिसेस आए हैं. In those particular cases, please highlight before the officer that a ASMT 10 on the same point has been issued. And ASMT 12 कब issue होता है? जब officer is satisfied that that particular demand or discrepancy is not there. So an officer who was satisfied 6 months back or 1 year back can now not say that my opinion has changed and therefore I'm issuing this particular show cause notice. So this is situation number 2. सिचुएशन नंबर 3, आपने इंक्वायरी करवाई, ASMT 11 का रिप्लाई दिया. हरीश जी मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज माइक, हरीश जी माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज. थैंक यू सर. सर आपने ASMT 11 में जवाब दिया बट ASMT 12 इशू नहीं हुआ. सर उसके अंदर भी दी ऑफिसर वाज सपोज टू इशू
the show cause notice within 30 days of your reply in ASMT 11. So जब आप show cause notice का reply करें तो please उसको बताइए under this particular rule that the show cause notice cannot be issued beyond 30 days from the answer or the reply in ASMT 11. Now coming on to the second part, sir, there was no inquiry which happened under ASMT 10. Sir, in those particular cases, the government was supposed to make an inquiry under either section 61, 65, 66, 67, 71. If the government is not undertaking inquiry under either of the section, a opinion cannot be formed by the officer straight away under 73. This particular point should be taken in your reply against the SCN, because this jurisdictional issue will surely help you in higher forums in case of effective demands. Number 3, जो officers ने show cause notice issue करे हैं, those particular show cause notices, they do not provide any particular ground. They are mechanical show cause notice. This particular software, which has been imported by Delhi government, is also prevalent in one or another state in the country, and that particular state has been issuing ASMT 10 using this software, and then they issued the show cause notice where the officers were not satisfied with the reply under ASMT 10. Delhi government used the same software but jumped the line. They, rather than you issuing ASMT 10, because there was a paucity of time. What was the paucity? If they do not issue the show cause notice up to September 30th, the show cause notice under 73 will become time bar for 1780. So my dear sir, kindly please also take note ki apart from the merit, don't take it as a scrutiny proceeding. Please point out whether your scrutiny under ASMT 10 happened or not happened. If it happened, whether it was accepted or not accepted, whether the officer is within the time as provided in the statute, can he issue the show cause notice, and then you come to the merit. Now what is the questions in merit? मेरा 3B मेरे 2A से कम है. My 3B ITC is more than what is shown in 2A. Now, sir, this is one of the most common grounds. Sir, was there any rule or provision which required comparison of 3B and 2A in 1780? The first rule which came, and that too was, in my humble opinion, without the underlying provision in the statute, Rule 36(4), it came in October 2019, and it was only after October 19 the power to compare 2A with 3B was given to the government. So in all the show cause notices which are there for 1718, there was no provision to compare and bring out a demand on the basis of comparison between 2A and 3B. So whenever you are replying to these particular notices, this should be one strong point which should be there, that under what rule are you comparing 2A and 3B? And more particularly when in the case of Bharti Airtel, Honorable Supreme Court has said that for 1718, it was merely it was not a form basis which ITC could be taken. It was merely a form which could be referred to. It was not having a statutory backing. It was only a helping form for the taxpayer. So when Honorable Supreme Court has laid the law of the land that this particular form cannot be the basis for taking the ITC, it can also not be the form for rejecting a ITC. So 3B और 2A के cases में ये particular point please ध्यान से revert करिएगा. In terms of 1 and 3B, 1 and 3B के जो आपके notices हैं सर, 1 और 3B के बीच में जो comparison हम करते हैं, 1 अगर कम है, 3B में टैक्स ज्यादा है, I don't think officers will issue a show cause. 1 अगर ज्यादा है और 3B कम है, वो किन ग्राउंड्स पे है? बेसिकली वो उन ग्राउंड्स में है जहां पर आपने एडवांस दिखा दिया, उसकी एडजस्टमेंट नहीं दिखाई, आपने कोई लायबिलिटी B2C में दिखा दी, बाद में B2B में डाल दी, तो वो लायबिलिटी 2 बार आपके उसमें रिकॉर्ड में आ रही है. सर, देयर विल बी इश्यूज इन 1 and 3B. In my humble opinion, in those particular cases, please go line by line. आपसे जो specific item duplicate हो रही है, give very specific reply, because in show cause notice, your reply should cover your merit completely.
Coming on to the third scenario where there was a reversal of ITC required in case of an exempted supply. हमने क्या करा, हमारे पास, मैं एक ट्रेडर हूं, मैं एक एग्जेम्प्टेड सप्लाई का भी ट्रेड करता हूं, टैक्सेबल का. लेट मी टेक अ वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल. मैं आटे का ट्रेडर हूं, अनब्रांडेड आटा एग्जेम्प्ट है, ब्रांडेड आटा टैक्सेबल है. मैंने 100 रुपए का ब्रांडेड बेचा, 100 रुपए का अनब्रांडेड बेचा. तो मेरा जो ब्रांडेड आटा था वो टैक्स लग के 5% पे मेरे पास आ रहा था. 10 करोड़ की मेरी टर्नओवर थी, 10 करोड़ की मेरी एग्जेम्प्टेड टर्नओवर थी. तो माय डियर सर, मैंने जो 10 करोड़ पे 50 लाख रुपए का क्रेडिट लिया, वो मेरा एक्सक्लूसिवली किससे डील लिंक है, टैक्सेबल सप्लाई से. और उसके बाद मैंने 2 लाख रुपए का क्रेडिट लिया, जो मेरे ऑडिट की फीस, लीगल फीस, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कॉमन क्रेडिट्स थे, वो मैंने लिए. अब जो ये नोटिस आया है, शो कॉज नोटिस, इसने क्या करा, इसने कहा आपने 10 करोड़ की टैक्सेबल करी है, 10 करोड़ की एग्जेम्प्टेड करी है, टोटल 20 करोड़ की है, तो 50% आपका आईटीसी आपको रिवर्स करना है. मीनिंग देयर बाय एग्जेम्प्टेड सप्लाई के रिलेशन में जो आपका आईटीसी है वो 50% है. तो आप कृपया करके 50 लाख और 2 लाख, 52 लाख का 50%, 26 लाख रुपीज, वाई इट शुड नॉट बी रिकवर्ड, क्योंकि आपने जो रिवर्सल करा है वो केवल 1 लाख का करा है, तो 25 लाख का रिवर्सल आप कर दीजिए. सर, टोटली नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड का शो कॉज है, क्योंकि कोई डिटेल, कोई इंक्वायरी, कोई इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास नहीं थी कि मेरा जो आईटीसी मैंने लिया है क्या वो कॉमन आईटीसी था या वो स्पेसिफिक आईटीसी था. रूल 42 बड़ा क्लियर है. रूल 42 कहता है जो टैक्सेबल से डायरेक्टली रिलेट करता है उस आईटीसी को पूरा आपको दिया जाएगा. जो आईटीसी एग्जेम्प्टेड से पूरा रिलेट करता है वो आपको पूरा रिवर्स करना है, और कॉमन को केवल आपको रेशियो में डिवाइड करना है. पर इस शो कॉज नोटिस में आप देखेंगे इसने पूरा आईटीसी रेशियो अप्लाई करा और आपसे डिमांड क्रिएट कर दी. सो जब ऐसा कोई शो कॉज आए, प्लीज बी वेरी वेरी स्पेसिफिक. आप अपनी टैक्सेबल के अगेंस्ट जो स्पेसिफिक एक्सक्लूसिव आईटीसी है विद रीजन अपने रिप्लाई में प्लीज जरूर डालिएगा. मैंने एक चीज और नोट करी है, बहुत सारे प्रोफेशनल मित्र जो हैं वो रीजन नहीं डालते. व्हाई इज इट एक्सक्लूसिवली लिंक, वो सिंपल लिख देते हैं इट इज एक्सक्लूसिवली लिंक. सर, ये शो कॉज स्टेज है. डू नॉट लीव योर स्टेटमेंट्स merely as statement. Do suffice those statements, because after this whatever is applicable, whatever will be done is will be in appeal stage. Whether at appeal stage you might be finding one more challenge, what you are producing there, will it be called a additional evidence or not? So don't get stuck into that. Whatever you want to say, maybe there are plethora of documents which are going. एक issue इसमें भी आता है, जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने की स्पेस है वो 5 MB की है, और जब आप स्कैन करेंगे तो वो 5 MB में नहीं आएगा. अगर ऐसा हो रहा है, वी वी हैड अ मीटिंग विद द learned commissioner and his team 2 days back, and we pointed out these particular issues. Number one, if it is not getting uploaded, they have also agreed आप इसको फिजिकल फाइल कर दीजिए और उसकी रिसीविंग लीजिएगा. अगर आप रिसीविंग नहीं ले रहे हैं, then also there is a problem. Now I'm coming on to one more important point. Whenever the show cause is there, it is the duty of the officer to give you a personal hearing. If he passes an order without giving you under section 73 or 74, that particular order will be against the principles of natural justice. A person can prefer a writ directly in the court to quash the order, because after that particular order you will have to deposit 10% under section 107 of the tax amount, which may be harsh for certain taxpayer. So ये 25 लाख के केस में हम ले लेते हैं, जो क्लाइंट, जो असेसी है, उसको 1 रुपए नहीं जमा करना, बट ऑफिसर ने विदाउट लुकिंग इनटू डॉक्यूमेंट्स, विदाउट गिविंग पर्सनल हियरिंग, if he has issued an order confirming the demand, that particular order, the person, if he wants to go into the first appeal, he will have to deposit 2.5 lakhs. So this might be unjust for certain taxpayers. Keep that in mind. Please, number one, provide all your reply in time. I have also seen, क्योंकि हम पुराने टाइम में शो कॉज की डेट्स को एडजर्न करवा लेते थे, इस नए दौर में एवरीथिंग हैज बिकम इलेक्ट्रॉनिक. So even if you are wanting an adjournment, you will have to go specifically request for adjournment on the website, on the common portal, and you have to do it within the timeline given. If you do not do it, the portal will block
your access in terms of submitting the reply. So once that particular extension has been applied by you, the proper officer will consider that, give you a new date of hearing and submitting the reply. So वो नई डेट के बिना अगर करता है, again it will be against the principles of natural justice. Either he has to accept or reject. And if he is rejecting, 3 adjournments are allowed under the act. I'm not saying that is a right, but yes, there should be some reasonable ground to take the adjournment, and preparation of a reply using the aid or help of a professional is again a good enough reason for taking an adjournment. So please do not, आपके पास जितने भी क्लाइंट के शोकॉज हैं एक चार्ट बना लीजिए, उसके आगे आप ड्यू डेट्स प्लीज लिख लीजिए. एक और कमी देखी गई है जो दिल्ली शोकॉज नोटिस में आई है, डेट ऑफ रिप्लाई डेट ऑफ हियरिंग के बाद है. मतलब ड्यू डेट जिसमें आप रिप्लाई सबमिट करते हैं वो तो आ रही है 26 अक्टूबर और डेट ऑफ हियरिंग आ रही है 10 अक्टूबर. सर, हाउ इज इट पॉसिबल? सो दिस एरर हैज बीन आल्सो informed to the concerned authorities, and we are told that this will also be rectified very soon. So you take your date as a due date of supply of reply, and you request therein that date of hearing should be taken on the same date as the due date of reply. So जो भी आपके सारे clients की dates हैं उसको note कर लीजिए, या तो extension या proper reply within that particular time जो है आपको डालना है. Now with this, it is already 3:45. I am putting my deliberation to rest. Just 2-3 minutes more. Vinay ji, Special हाँ, request, 2-3 minutes. नहीं सर, I'm there. Thank you. मैं एक बार जानजी साहब से पूछना चाहूंगा, सर, सुधीर सर, is there anything further which you want me to add on this topic which you asked, sir? Hello, sir. Sir. Sir, मेरा question it was regarding Form 9 being filed for ये 17-18 के cases में. ठीक है सर. And there Right, sir. there are some clerical errors or omissions. Correct, sir. Filing into the wrong column or wrong cell. जैसे मैं एक केस है particularly exempt supply की बात, it was a zero rated export sale थी जो exempt में डाल दी गई क्योंकि टैक्स जीरो था. It was a clerical omission और ये Form 9 में है committed. So कोई इशू नहीं है सर. What is the recourse available on it? और Sir, उसी के बेस के ऊपर ये शोकॉज आया हुआ है. कोई बात नहीं सर, ये कॉमन प्रॉब्लम है. इसमें 2 तरह के शोकॉज आए हुए हैं. एक तो उसके ऊपर डिमांड आईटीसी की करी गई है, रिवर्सल ऑफ आईटीसी की. सेम सर. ठीक है सर. अभी तक एग्जेम्प्टेड के ऊपर टैक्स की डिमांड का शोकॉज मैंने नहीं देखा. अगर आया है तो पता चल जाएगा. ये आईटीसी के रिवर्सल मांग रहे हैं उस पर्टिकुलर कॉलम के कारण. सर, आप अपने रिप्लाई में अपनी पूरी टर्नओवर का उसका ब्रेकअप दे दीजिए. स्पेसिफिकली जो एग्जेम्प्टेड में डाला गया है उसकी लाइन बाय लाइन आइटम along with the shipping bill कि this is relating to the zero rated supply, not exempted supply. I am no dealer in exempted supply, and therefore since there is no exempted supply, no reversal is required. But please do provide the detail of shipping bill, and also please prove line wise. मतलब say there are 300 invoices, so 300 yes, sir. line wise करते हैं. Correct, so that we are able to establish our claim that there is a export, genuine export reported wrongly in the column, and number 2, there is no column where these particular line items have been reported. So as the person can see that the figure will be totally and completely correlatable. And plus please sir, we can quote it that the error is due to the clerical omission. We add a line. yes sir. There are graver, I would say there are more grave situations. कई बारी नेटिंग कर रखी है आउटपुट और इनपुट की. आई एम आल्सो कंटेस्टिंग इट वन ऑफ द बिफोर वन ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट्स. नेटिंग कर दी आउटपुट और इनपुट की इन 3B एंड Form 9. उन केसेस को भी हम एक क्लैरिकल रिप्रेजेंटेशन एरर मान रहे हैं, एंड वी आर फाइटिंग दैट. अदरवाइज तो देयर इज प्लेंथोरा ऑफ एग्जांपल्स. ये तो आप हमारे ये वाला एग्जांपल तो बहुत वन ऑफ द लाइटेस्ट एग्जांपल है क्योंकि ये प्रूव हो सकता है. In other cases, the department is saying, sir, when you have netted, how will I get to know? So you have to pay your output while you have not taken your ITC. Sure. So I think this is one of the lightest cases, sir. Easily doable. सर, मैंने इस क्वेश्चन को ना 1-2 ग्रुप्स में डाला था, लाइक सेल टैक्स या किसी और जगह पे भी. तो somebody had replied कि you should be seeking to file
revised Form 9 No should provision be to, under the law. because there is no provision. That's why my Correct, point was correct, on correct, this line out correct. there. Rather, you should say that this form was supposed to be generated automatically from 1, 2, and 3. And being the initial year, we were Yeah, waiting very that first 2 year. and 3, correct. 2 and 3 should have come. But unfortunately, the entire mechanism, we were told in 2018 end that 2 and 3 will not be there. 3B has become the permanent mechanism. But by that time, we were out of the zone of revising any of the returns filed. Now there are people who have filed exempted supply in 1. Sir, exempted can never be amended. आपने अगर exempted एक बार कॉलम में डाल दिया तो आप उसको amend नहीं कर सकते. So these are all clerical errors. You can write, you can contest, and there is a duly audited balance sheet. If you can submit a CA certificate to that count, that will also help you. I suppose, Dani sir, I suppose you are through with your query. Yeah, please. Thank you. Thank you. गौरव जी बस 2-3 Thank you. मिनट और लेंगे आपके, क्योंकि सर, मेरा बताइए। बीच में पावर। विनय जी मेरी भी एक क्वेरी है। एक मिनट हाँ जी महेश जी, सर। एक मिनट। आप चैट बॉक्स में 3 क्वेरी हैं, मैं उसको रिपीट इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे सिस्टम पे पावर ऑफ हो गया था, तो वो चैट वहां से क्वेरी खत्म हो गई है। 3 क्वेरी हैं, एक इसमें शायद अंकित अरोड़ा की है, एक इसमें सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आज एक्चुअली आईपैड पे हूं, मैं चैट बॉक्स अलग से देख नहीं पा रहा हूं। क्या वो जिनकी क्वेरी है क्या वो बोल सकते हैं, मैं हाथों हाथ रिप्लाई कर दूं? ठीक है, जिसने भी वो इसमें क्वेरी डाली है वो अपना हैंड रेज कर लें, बारी बारी से दे देते हैं सबसे पहले, क्योंकि हाँ अंकित अग्रवाल, यस प्लीज। सर जो आपने बताया कि Please, रजिस्ट्रेशन पर्सन डीलिंग इन सोनली एग्जेम्प्टेड सप्लाईज, उसको रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है। अगर वो एक्सपोर्ट कर रहा है क्या तब भी वो ओवरराइड इफेक्ट रहेगा एग्जेम्प्टेड सप्लाई वाला? क्योंकि नहीं एक्सपोर्ट सर, वाला ना एक्सपोर्ट तो एग्जेम्प्टेड है ही नहीं ना अंकित जी। नहीं, बट वो गुड्स जो है सर वो एग्जेम्प्टेड है, तो एक्सपोर्ट में मैंडेटरी होता है और एग्जेम्प्टेड में रजिस्ट्रेशन नहीं रिक्वायर्ड है, तो फिर कौन सा इसमें ओवरराइड करेगा? एग्जेम्प्टेड वाला ओवरराइड करेगा, अनलेस एक चीज का और ध्यान रखिएगा, अंडर सेक्शन 16 ऑफ आईजीएसटी एक्ट यू आर एलिजिबल टू क्लेम रिफंड इन केस ऑफ exempted supplies also, export of exempted supplies. So if you are not taking that benefit, you can live with it. मैं रजिस्ट्रेशन छोड़ सकते हैं 100%. Okay, I through Ankit ji. Ankit ji, that is my Thank humble you. opinion on that, and I don't see any hurdle to that particular count, sir. ठीक है ना? महेश जी, और उसके बाद जिसकी क्वेरी है वो हैंड रेज कर लें। महेश जी के बाद जो होंगे फटाफट करके, और फिर गौरव जी को आगे मीटिंग में जहाँ मूव करना है, so we have to leave him for that. हाँ जी गौरव रविंद्र जी एक मिनट, महेश जी के बाद रविंद्र जी ले लेंगे। महेश जी। हाँ जी सर बताइए। गौरव जी मेरी एक क्वेरी, जो ओशन फ्रेट है जो सीआईएफ वैल्यू वाला है, तो इसमें जैसे कि हम लोग जो प्रोसीजर बताया था, जितनी परचेज थी उसका 10% फ्रेट माना जाता था और उसका 5% आरसीएम जमा कराया जाता था। खत्म हो गया सर, सीआईएफ आफ्टर सुप्रीम कोर्ट वो तो खत्म हो गया मोहित मिनल के केस में। अभी मैं एक रिप्रेजेंटेशन में गया हुआ था, वो ये बोला कि आप 0.5% परचेज पे दे रहे हो, बोला ये आपका आरसीएम है, ये इनपुट मिलेगा नहीं इसका। नहीं, जो आपने टैक्स जमा करा था हाँ, उसका इनपुट नहीं मिलेगा सर। अगर कोई भी चीज एज टैक्स एक्सेप्ट करिए आउटपुट पे, हाँ, तो उस नेचर को इनपुट के वक्त बदल नहीं सकता। इट्स अ ट्राइट लॉ, सो ऑफिसर इज 100% रॉन्ग when he has accepted something as a reverse charge. He cannot say now I will not give you the credit of this. And if it is not a reverse charge, then it is a tax which is under the constitution, not rightfully collected by the government. Claim refund. वो कहता मेरे को दिखाओ कहाँ पे लिखा हुआ है। क्या दिखाएं? बोला ये 0.5, वो उसको 5% मान के 0.5 आईटीसी की नहीं सर, ये एक मिनट, 1%, 0.5% ये सेकेंडरी बात है। अगर कोई चीज रिवर्स चार्ज में पे करी गई है, आईटीसी की डेफिनेशन में रिवर्स चार्ज को स्पेसिफिकली इंक्लूड किया गया, तो उसको आईटीसी का सेक्शन दिखा दी। कहना अच्छा। अगर तेरे को झगड़ा 0.5 का है तो मेरे आउटपुट पे झगड़, आईटीसी के वक्त में झगड़। यू क्लेम दैट मेरा आउटपुट गलत पेड है, देन वी विल स्पीक ऑन दिस। अच्छा ठीक है, ठीक। मैंने आपको एक आइटम बेची, उसका रेट है 5%, मैंने 12% लगा के दिया। अगर गवर्नमेंट ने मेरे से 12% एक्सेप्ट कर लिया, आपके आईटीसी के वक्त 5% का चैलेंज नहीं कर सकते। पर वो पता क्या कह रहा था,
एक मिनट भाई, एक मिनट मोहित जी, हाँ प्लीज, चलो। हाँ रविंदर जी प्लीज। पहले रविंदर जी, फिर हम मोहित जी के हाँ पास जी। आएंगे और फिर संजय जी के पास। हाँ जी रविंदर जी। मेरा क्वेश्चन है कि कोई मॉनेटरी लिमिट है ये शोकॉज इशू करने की? जैसे एक सर्कुलर मैंने देखा था 31 मई 2018 का था सेंटर का, जिसमें उन्होंने मॉनेटरी लिमिट दे रखी है कि शोकॉज इशू कर सकते हैं अबाउट 2 करोड़ नहीं, के वो सेंटर, सी jurisdictions have been divided in various forms by center and state. सेंटर ने jurisdiction ऑफिसर की रैंकिंग के हिसाब से, एरिया के हिसाब से और अमाउंट के हिसाब से, तीनों के हिसाब से इशू कर रखी है। स्टेट ने केवल और केवल वार्ड्स, एरिया के हिसाब से jurisdiction इशू कर रखी है। So that particular jurisdiction, monetary jurisdiction, will not be applicable on states. ओके। एंड सेकंड, जो डीआरसी 1 कोई इशू नहीं कर रहा, जो वो मैंडेटरी है प्री वो कंसल्टेशन? मैंने आपको बताया सर, कोई भी प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ है। 61, 65, 66, 67, 71 एंड DRC 01A एज रिक्वायर्ड अंडर द रूल। सो ये सारे पॉइंट्स आपको लेने हैं कि द फॉर्मेशन ऑफ द ओपिनियन and the procedures which were supposed to be followed have not been followed, and therefore the issuance of SCN is totally illegal. Something which is to be done in a particular manner as per the statute, it's a trite law, it has to be done in that particular manner. So एंड सर, with you, जो क्रेडिट लेने में इंटर एड मिस्टेक्स हुई हैं, टोटल क्रेडिट सेम ही लिया बट इंटर एड मिस्टेक्स हुई हैं, उसके लिए क्या करें? रविंदर जी, वो एक प्रॉब्लम है, वो एक प्रॉब्लम है। वी विल सी ऑन केस टू केस। इफ इट वाज आई टेकन एज CNS, आई थिंक इट इज अ गुड केस टू कॉन्टेस्ट, बिकॉज आई जो है वो न्यूट्रल टैक्स है, आपको कहीं भी मिल जाता है। बट अगर इफ CNS has been taken as I and used inter between CNS, there can be a problem, sir. So on a case to case, please go and fight this case. मोहित गुप्ता जी और उसके बाद संजय सिंघल जी, एंड देन विल कम टू द लास्ट क्वेरी फ्रॉम सर I'll take दो मिनट और दो क्वेरी फटाफट। और मेंबर से रिक्वेस्ट है कि वो अपनी क्वेरी को बड़ा ब्रीफ करें, तो ताकि क्वेरी को गौरव जी को रिटेन कर पाए हम 2 मिनट के लिए। प्लीज सर, मोहित जी प्लीज। मोहित भाई तो सीधा फोन कर सकते हैं। नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल भाई। आप सर, मैं ये कह रहा हूँ, इनपुट डीलर का हमारे 1 जुलाई 17 से रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया सर। हमने बिल्कुल चेक से पेमेंट है, सारी चीजें हैं। इनपुट डीलर का आपका बैकडेटेड कर दिया। कलकत्ता हाईकोर्ट का अभी डिसीजन आया है कि अगर आपके सप्लायर का बैकडेटेड कैंसिल कर दिया है, आपको क्रेडिट मना नहीं कर सकते। ठीक है। तो और प्रैक्टिकली क्या बोले सर? प्रैक्टिकली आप कोट करिए ना कलकत्ता हाई को। और प्लस आपको याद होगा सी फॉर्म के केस में भी यही होता था, बैकडेट से कैंसिल कर देते थे सप्लायर का, सी फॉर्म आपको इशूड होता था। तब भी हाई कोर्ट ने कहा वंस इट इज इशूड, it cannot be made effective on the buyer. You do whatever you want to do with the supplier. अभी आपको in my humble opinion शो कॉज से पहले ये हाईलाइट मत करिए। उसका रीजन क्या है? शो कॉज इज द फाइनल ओपिनियन ऑफ द ऑफिसर। द मोर यू चैलेंज हिम बिफोर शो कॉज, द बेटर हिज शो कॉज विल बी। शो कॉज आ गया सर, शो कॉज आ गया, फुल फोर्स से चैलेंज कर दीजिए, कोई इशू नहीं। सर एक लास्ट क्वेश्चन है सर। स्पेशल ऑडिट हमारा 17-18 में हो गया सर। मोहित जी एक मिनट, आपकी क्वेरी होगी, एक संजय सिंघल जी की ले लें क्योंकि गौरव जी को जाना है। संजय सिंघल जी। सर, दिल्ली में रजिस्टर्ड है डीलर और बॉम्बे से माल आ रहा है, तो मान लो लास्ट डे में आ रहा है, तो अब ये जो 3B की नई वो आई है DRC 01C आएगा, तो उस सिलसिले में क्या करें सर? कैसे इनपुट लें? साथ के साथ लें कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी दिखा के, या सर लेकर रिवर्स कर दीजिए और अगले महीने फिर ले लीजिए। और अब तो गवर्नमेंट ने एक ये नया सा कॉलम बना दिया है कि पिछले साल का जितना ITC आपने लिया और रिवर्स किया उसको 30/11 तक आपको डालना है। सो जो लिया और रिवर्स करके फिर दोबारा ले लीजिए, आपकी संजय जी नोटिस नहीं आएगा, क्योंकि टू दैट एक्सटेंट वो बैक जो सिस्टम है वो पीछे कंप्यूट कर रहा है इस पर्टिकुलर प्रोसेस को। ठीक है, बट यस आई कैन नॉट ओवर रूल इट आउटराइटली। अगर आएगा तो यू हैव एन आंसर। देखिए साहब, मैंने 2B के हिसाब से लिया, रिवर्स कर दिया, और जिस महीने में मेरी कंडीशन पूरी हुई मैंने अवेल कर लिया। और 1C और 1B अगर आप रिप्लाई कर देते हैं, ऑटोमेटिकली आपके पोर्टल को खोल देता है। फिर उसके बाद ऑफिसर एग्जामिन करेगा, ASMT 10 या शो कॉज इशू करेगा। सौरभ जी 2 मिनट में कर रहा हूँ। Friends, I suppose I'm very thankful to Gaurav ji. No more query, I presume.
सर आई हैव वन क्वेरी सर। एक मिनट होगा सर। सर हमारा Moji, I am taking liberty to call you after this meeting. I'll call you. ठीक है। राहुल लेनी है कोई क्वेरी है? छोटी सी 15 सेकंड। विनय जी एक क्वेरी है। हाँ बोले सर। एक SCN 18/9 को इशू किया गया, उसमें डिमांड थी 10 लाख रुपए की। सेम ऑफिसर ने उसी SSC का 17/18 का दोबारा 29/9 को दिया, उसमें डिमांड है 2 लाख रुपए की। ठीक है, वो सब्जेक्ट मैटर कोई है नहीं, तो व्हाट शुड वी डू? शुड वी रिप्लाई बोथ द SCNs? During the pendency of the first show cause notice, the second show cause notice on the same issue cannot be issued. So you can challenge that it is a trite law, but if the issue is different for the same year. One issue was in the original SCN that IGST was not allowed against the import IGST duty payment, because that we claimed in the other ITCs. Now in the second show cause notice, that ITC which was the subject matter of SCN is not the subject matter of the revised SCN. It is not revised SCN. It is two show cause notices on two different issues. Both are valid, sir. The second rest of the part of the SCN in both the cases is the same. Sir, only thing is that in the first SCN, IGST for import payment was also a subject matter, which is not the subject matter in the second part. Second part of the second part of the 2A 3B difference or the block credit or the ineligible credit, that remains the same in the second show cause notice. Sir, I'm again repeating myself. अगर subject matter दोनों का same है, amount अलग है, second show cause notice is not valid. But if there is any new ground in the second show cause notice and other grounds are same, then the second show cause notice, the additional issue may be allowed by the court, because it is on a different so better ground. it is we should reply both the show cause notices. Correct, sir. And you should also आप reply करिए, but please also take this ground that two show cause notices for the same year, the opinion has been differed by the officer, and therefore the second should become infructuous because it is having common grounds and leading to a dual liability. But in the second show cause notice, the proposed liability is reduced. Whatever. आप देख लें एक बार, उसका रीजन आप एक बार देख लें, सब्जेक्ट आप देख लीजिए. Correct. सर मैं कह रहा हूँ जहां डुप्लीकेट सब्जेक्ट है वहां पर एक लाइन जरूर डाल दीजिए. On the same issue, double show cause notice or dual liability cannot be made. Created. Okay. और सर इसका प्रोविजन कौन सा होगा डबल शो कॉज नोटिस का? प्रोविजन है ही नहीं ना यार. ये वो आपके पास शो कॉज, there is no provision with the officer to issue a double show cause notice. Please understand. Ankit ji, there cannot be two life in one body. There can be double, one life in one body. No double jeopardy. No double jeopardy. So, friends, Gaurav ji, really thankful for, I mean, after even giving a 40 minutes, it is 1 hour and really more than 1 hour. Thank you very much, friends. Thank you, Gaurav ji. Thanks a lot. So, now let me take this, it's my proud privilege to introduce Pramod Jain ji to deliberate on Stishi बस 10 मिनट के लिए. अच्छा जी, नहीं 15 मिनट 15 मिनट के लिए, चलो ठीक है. प्रमोद जी, Pramod ji, Satish ji, sir, a very good afternoon to you. Please allow me to take liberty to leave right now, please, sir. And with a great round of applause, sir. Thanks, Gaurav ji, once again. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Friends, let me take, it's my proud privilege to introduce CA Pramod Jain ji, our Central Council member. And at my request, he immediately acceded to my request, rather, to deliberate on certain matters which are of the urgent and important, I mean, the need and great attention to the members for the professional in relation to the institute and in relation to the many other issue. Over to Pramod. Thank you very much, Vinay bhai. Namaste to all. With Jain ji, Patra ji, and our speakers and all my dear friends, Gaurav ji and all everyone, sabko namaste. In fact, thank you, Vinay ji, for inviting me to share just few points, not too much. One of the very, very important points for information of everyone is that you all know that the multidisciplinary partnership
has been allowed to chartered accountants in the year 2021. There were certain amendments which were required to enable it. So that has been done in September 2023. So we are trying to have that on the SSP portal. इसका मतलब क्या है कि in the CA firm now you can have partners from another 6 professionals. That is cost accountant, company secretaries, and advocates, actuarials, engineers, company secretary, cost accountants, advocates, engineers, and actuarials. Architect also. And architects. These 6. So these 6 can become a partner in your CA firm, and the firm would be known as, now suppose the firm name is ABC and Co, then you write chartered accountants. So you will be writing ABC and Co multidisciplinary partnership of chartered accountants, MDP of CAs. तो उसके अंदर वो वाली एक्टिविटीज भी हो सकती है, उनके साथ प्रॉफिट शेयरिंग वगैरह भी अलाउड है. सो there could be an assignment where you require software engineers or company secretaries or cost accountants or advocates. So all those combined services can be given through that your CA firm, the MDP firm. So I am hoping that by maximum this month or next month, this would be enabled on the SSP portal. Practically बताऊं तो हमारे इंस्टीट्यूट ने तो ऑलरेडी अलाउ कर दिया, इट हैज ऑलरेडी अलाउड. But other professionals like advocates, cost accountant, company secretaries, their institutes have not allowed. But yes, engineers, architects, you can have it. Actuarials also they have not allowed. But once when we'll start, then we will push with the other through the ministry that they should also allow. They should also allow. So this would be a really great push for the chartered accountants to provide multidisciplinary services to various clients throughout the countries. Also, there are proposals going on for the changing into networking and the MCS guidelines, which I'll inform in the suitable time to come whenever those are approved. But yes, you can gear up to prepare yourself to form an MDP where you want to say provide some services where you require the services of the software engineers or others. Through your firm they can go and they can become your partner. आप तैयारी कर लीजिए, most probably by this month end or the next month it would be there. So any questions on the MDP, then I can take. Friends, MDP is a new position which the institute has taken. जैन साहब, प्लीज. जैन साहब, ये न्यू पार्टनरशिप कॉन्सेप्ट में कोड ऑफ कंडक्ट बाकी सब पे कैसे एप्लीकेबल होगा? जो उनके प्रोफेशनल्स हैं उनके रेगुलेटर्स करेंगे. मान लीजिए कोई कंपनी सेक्रेटरी है, कोई एडवोकेट है, तो उनकी सर्विसेज के ऊपर उनके रेगुलेटर्स वुड बी टेकिंग एक्शन. Will it not be confusing? Will it not be overlapping and confusing? Not confusing because मेरी सीए फर्म है, मेरे को आईसीआई के एथिक्स एप्लीकेबल है. एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता तो उस एमडीपी में भी नहीं कर सकता एडवर्टाइजमेंट. Those guidelines would follow and the head in charge उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि ये जो दूसरे प्रोफेशनल्स हैं उनका एनुअल केवाईसी करेंगे. दूसरा पॉइंट हमारा केवाईएम. KYM was introduced this year, and yes, at the end there was certain because members who did early, they were all very fine, but those who thought to do it at the end of the 30th September, again they were pushed along with their own professional work, so they had certain issues. So that has been extended for a month. But however, just to tell you, out of around 4 lakh members, only nearly 40,000 members are left, including members in job as well as in practice, to complete their KYM and pay the fees. So इतने ही रह गए हैं, बाकी सब हो जाएंगे, हो चुके हैं. So that has been a good success in to that extent कि बहुत सारे लोगों के एड्रेस अप टू डेट हो गए, एम्प्लॉयमेंट अप टू डेट हो गई, ब्रांचेस ठीक हो गए. सो काफी सारी चीजें उसमें ठीक हो गई. करीब 3,000 फर्में बंद हो गई हैं, 5,000 के करीब आपके एड्रेसेस चेंज हुए हैं. सो ऑल दोस थिंग्स हैव taken a good shape. I hope that would
have the database of the institute on a good platform, because that was required from various regulators as well as the courts. So that has been done. But this is annual exercise? Annual exercise, annually. देखो सर, ये क्लोज डोर है, तुम आपको ये तो बता सकता हूँ कि पीछे बहुत सारी ऐसे केसेस हुए कि मेंबर रहा नहीं फिर भी वो पार्टनर रहा. ऑल दोस थिंग्स हैव बीन देयर. तो वो सब चीजें ठीक करने के लिए, क्योंकि बहुत पुश आ रहा था गवर्नमेंट से पिछले कई सालों से, so it is under the MSS committee of which I am the convener right now, so we took it up and we have done it. मेंबर्स को 50 इयर्स कंप्लीट होने के ऊपर सबको कॉन्ग्रेचुलेटरी कार्ड्स गए, जिनके अगर 50 इयर्स ऑफ प्रैक्टिस हो गई है कंटिन्यूअस तो उनको मिले होंगे. हमने कोशिश की मिले. वी आर ट्राइंग इवन फॉर द 25 इयर्स, तो लेट अस सी वो भी जल्दी हो जाएंगे. और जिनके 25 साल पहले हो चुके उनको भी उनको मिलेंगे. मिलेंगे सर, मिलेंगे. मतलब 25 और 50 के बीच वालों को. हाँ, 25 वालों को भी मिलेंगे. प्रमोद जी, एक सजेशन है सर, ये कार्ड सर्टेनली इट इज एन ऑनर फॉर एनी ऑफ द सीनियर मेंबर, लेकिन उसके साथ डजंट यू थिंक द पर्सन जिसने 50 साल प्रोफेशन को दिए हैं और आपको मेंबरशिप भी, आपको नहीं, हमारी इंस्टीट्यूट का मेंबरशिप भी दी है, तो उसको किसी तरह से कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस, क्योंकि उस समय उसकी वर्किंग कैपेबिलिटी कम हो जाती है, उस समय अगर हम लोग मैं सर आपको एक बात बताऊं, सॉर्ट ऑफ, एक मिनट सर, ए सॉर्ट ऑफ पेंशन, इट इज ओनली अ सजेशन सर, इट इज व्हाट आई एम सेइंग इज इट इज समथिंग ऑफ दिस एंगल would give a more better नहीं, मैं समझ गया आपकी बात सर. आपको बता रहा हूँ सर, आपको बता रहा हूँ जानजी साहब, अपने इंस्टीट्यूट का एक प्रोग्राम है वी केयर. वी केयर में 75 इयर्स एंड अबव के जो मेंबर्स हैं, इयर्स एंड अबव, नॉट इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, एज 75 इयर्स, तो उनका केयर के लिए हमने डेलीगेट कर रखा है कि हर ब्रांच से, रीजन से मेंबर जाता है, उनसे पूछता है आपको कोई जरूरत है, कोई दवाई की, कोई फाइनेंशियल हेल्प की. तो हम जब मेंबर्स के पास जाते हो कहते हैं सर आप हमसे क्या फाइनेंशियल हेल्प लेंगे, हम आपको देते हैं. कहते हैं वी आर सो वेल ऑफ, सर आई डू कोई एग्री, नहीं सोच दिया है, कहते हैं आपको सब क्या देते हैं. सर मैं ये कहना चाहूंगा यहाँ पे थोड़ा सा, देयर इट इज अक्रॉस द बोर्ड की बात आ गई. यू आर ऑफरिंग, मे बी ही इज हैविंग ए वेरी गुड फाइनेंशियल पोजीशन, ही मे नॉट रिक्वायर इट, बट देयर वुड बी certain cases, maybe it is only 10%, they might be requiring, तो उनको किसी कोई इस ऐसा तरह हो ना तो आप हमको बताइएगा, हम वी केयर के थ्रू उसमें से करवाएंगे. सर लेट इट बी. सर यहाँ पे मेरा थोड़ा सा डिफरेंस है, why he should be asking for it, why it should not be a right for him to have it and leave it. नहीं जानजी सर जी, देखो, मैटर ऑफ राइट. जानजी साहब एक पॉइंट आपको बता दूं, फिर आप कहिएगा. सर बताएं. हमारा इंस्टीट्यूट इज थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, इट इज नॉट एन एसोसिएशन. सर गवर्नमेंट में भी तो पेंशन जो मिलती है, फंक्शन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, सुनो तो तो उसके सही ना. अंदर. अरे अभी मैंने कंप्लीट कहा क्या जानजी साहब, आपने पूरा बोल लिया ना, मेरे को तो बोलने दो. पूरा तो सर सुन मैं, लो. सर आप ऐसा नहीं है पॉलिटिशियन सर, है, पूरा. मैं नहीं हूँ. सर पहली बात सर तो ये है कि मैं यहाँ पे एज अ पॉलिटिशियन नहीं आया. नहीं, आई डू एग्री सर. मैं यहाँ पे प्लीज एज अ डोंट टेक इट प्रमोटर डिफरेंट आया. वे सर, डोंट टेक इट डिफरेंट वे. इट इज अ लाइटर वेन एंड एट द सेम टाइम माय सबमिशन. लेट अस रैशनलाइज द नहीं, पोजीशन. दिस इज व्हाट माय अरे पॉइंट है. जानजी साहब पहले अपन समझे तो सही. अपन फैक्ट समझे बिना बोल लेते हैं. अपन फैक्ट तो समझे कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते. सर जब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट का सेक्शन 15 है, पार्लियामेंट के थ्रू है, आप यही एक्टिविटीज कर सकते हैं. आप विश्वास कीजिए, काउंसिल में हमने इतनी डेलिब्रेशन की कि हम अपने इंस्टीट्यूट से बेनेवोलेंट फंड के अंदर कुछ मनी ट्रांसफर कर दें. इट वाज नॉट अलाउड. वी कैनॉट गिव मनी टू मेंबर्स, वी कैनॉट ट्रांसफर टू पर्पस अदर देन एजुकेशन, वी कैनॉट गिव. ये काम एसोसिएशन बेनेवोलेंट फंड कर सकता है, लेकिन बेनेवोलेंट फंड भी करेगा वो 12 ATG में रजिस्टर्ड, सबके इनकम टैक्स में एक्सपर्ट है. वो तभी कर सकता है जब वो उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन में कोई इशू हो, तब आ सकता है. सर बहुत सारी चीजें हैं जो सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए, बट हाथ इंस्टीट्यूट के रेगुलेशंस के अंदर बंधे हुए हैं सर. दूसरी बात, एक मिनट, दूसरी बात मैं जान लीजिए, एक बात आता है, जैसे प्रमोद जी ने अभी कहा ना कि मेंबर्स 75 एंड अबव के मेंबर्स के पास जाते हैं, तो आई होप कि जब वो मेंबर्स के पास जाते होंगे तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन पूछने से पहले, अगर बहुत ज्यादा परमात्मा ना करे किसी की
बड़ी दिक्कत में कंडीशन है, तो वो उनको पता भी लग जाती है कि जब ब्रांचेस जाते होंगे, तो फिजिकली जब कांटेक्ट होता होगा तब मैनी ऑफ द थिंग्स और मस्ट हैव विनय बीन जी, मैं आपको बताऊं, नहीं नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं विनय जी, और वहां पे भी हम ब्रांच वालों को कहते हैं भाई इंस्टीट्यूट आपको उनको हेल्प करने के लिए पैसे नहीं देगा, आप अपनी जेब से देंगे। उसका रीजन है कि उनका कर्तव्य है, फर्ज है कि भाई सीनियर्स की रिस्पेक्ट करना। तो आप जा रहे हैं, उनपे पूछ रहे हैं, उनकी कोई हेल्प, उनको देखो किसी को पैसे की जरूरत नहीं होती, एक उनको मॉरल सपोर्ट होता है, हाँ जी आप आए, हाँ जी आप आए, कुछ पूछा, कुछ जरूरत हुई सपोर्ट की, तो वी आर देयर फॉर, वो वाली। Anyhow, I've just put my point, sir. नहीं नहीं, दैट इज राइट Which when the senior members, a very few case, I don't know, ये शायद 1% भी केस ना निकले यहाँ से, क्योंकि नहीं इतनी नहीं तो सर, हमारे इंस्टीट्यूट ने हमें इतनी कैपेबिलिटी दी है कि इतना तो इकट्ठा हो ही जाता है। सर ऐसे होना चाहिए, हेल्प माय बडी, जिसको नजर आए कोई मेंबर इन डिस्ट्रेस में है, दूसरा सर मेंबर इंस्टीट्यूट के सामने ले आए, बात खत्म हो गई। मतलब हम वाई इंस्टीट्यूट के ऊपर क्यों फेंके सारा वजन आज तक, ओके, मतलब वाई अननेसेसरी इंस्टीट्यूट को इससे एक और पंगे में डाल नहीं दे, बाबा साहब, आगे कम है उनके पास। मेरा पॉइंट था डिफरेंट सीगा कि इंस्टीट्यूट अगर कुछ शोल्डर कर सकती है तो कर ले, इफ सर इट इज कर देगी ना, पॉसिबल। आप बताओ, यू ब्रिंग फॉरवर्ड दी केसेस, मैं हम सर, करवा देते हैं, कहीं से मैं करवाएं। जनरल मैटर की बात कर रहा हूँ, मैं किसी के केस कोई ना तो चलिए मेरे दिमाग में इस समय, मुझे कोई केस नहीं है ठीक ऐसा है, दिमाग में। जाजी साहब, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हाँ सर सर प्लीज। तो सर एमडीपी के लिए तैयारी करें, नेटवर्किंग के तो जैसे चेंज अगर कुछ आता है, वी आर प्रपोजिंग वेरी सून, दैट वुड बी अगेन वन ऑफ द वेरी मेजर चेंजेस, लेट अस सी, जब तक हो नहीं जाता आई वोंट टेल। Yes, MDP, you can prepare yourself, those who want to grow big, they can start because the regulation is all, guidelines are already been passed. So अभी मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा क्योंकि इससे ज्यादा अभी नहीं बोलूंगा। आई वुड रिक्वेस्ट सतीश जी, विनय जी, प्लीज टेक ओवर, कोई प्रॉब्लम इतना नहीं ही है, टाइम you मेरे take को as था। much time. नहीं नहीं, अभी इतना ही ठीक है सर, आज के लिए इतना ही ठीक प्रमोद है, जी, फिर एक नेक्स्ट। क्वेश्चन है आपसे। हाँ बोलो ना। एक वो भी कुछ दिनों पहले एक वो आया था टू होम्स में कंसर्न का, सर्टिफिकेट के ऊपर है। हाँ, अगर आपको ये सर्टिफिकेट इस लाइन पे लिख के देते हो तो वो मिसकंडक्ट या जो भी उसमें एथिक्स के अंदर में नहीं आएगा। अगर उस सर्टिफिकेट पे नीचे लिखा हुआ होता है कि दिस सर्टिफिकेट इज इशूड ऑन स्पेसिफिक रिक्वेस्ट बाय द, जो भी नाम जिसका लिए दे रहे हैं और जिस पर्पज के लिए दे रहे हैं, तो भी क्या ऊपर लिखना गलत हो जाएगा? सर इसके अंदर ना पूरा हम लोग एक सेशन लेते हैं, बट आपको बताऊं टू होम्स कंसर्न तो बहुत सालों से खत्म हो चुका है, बहुत सालों से खत्म हो चुका है। आपको पता होना चाहिए कि हम लोगों को पता होना चाहिए कि अपने इंस्टीट्यूट के गाइडेंस नोट्स हैं, और गाइडेंस नोट मैंडेटरी होते हैं। तो 2016 का एक गाइडेंस नोट है विच इज स्पेशल पर्पस गाइडेंस नोट ऑन स्पेशल पर्पस रिपोर्ट्स एंड सर्टिफिकेट्स। वो ये कहता है अगर आपको कोई सर्टिफिकेट इशू करना है तो उसका फॉर्मेट उस गाइडेंस नोट के हिसाब से होना चाहिए। उसमें 4 एग्जाम्पल दे रखे हैं, और उसमें टू होम्सवेयर कंसर्न तो सर है ही नहीं। उसके अंदर पूरा है कि क्या मेरा एंगेजमेंट लेटर था, क्या मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या प्रैक्टिशनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या मेरा ओपिनियन है, क्या रिस्ट्रिक्शन ऑफ यूज है, पूरा 2-2.5 पेज का है सर। आप हम लोगों को सर्टिफिकेट उसके अलावा हम कर ही नहीं सकते लीगली। मैंने कहा जैन साहब, इन लास्ट 30 years of our practice we had never written to whomsoever it may concern, we only write certificate. नहीं, उसमें जैन साहब नहीं क्या नहीं सर, इशू होता है? सर्टिफिकेट का भी फॉर्मेट है सर। सर सर्टिफिकेट का भी फॉर्मेट है That's true, सर। that's true, that's true. नहीं, वो बैंक वाले, जो कुछ लोग, कुछ बैंक वाले बड़े इंसिस्ट करते हैं कि अंदर आप लिख दो, बैंक का नाम लिख दो, एसएससी का नाम लिख दो, कुछ भी लिख दो, ऊपर की लाइन बोला टू होम्स में इट कैन बी कंसर्न। महेश जी अपन ये समझे, वी आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वी विल नॉट गो एज पर व्हाट बैंकर सेज, वी विल गो एज पर व्हाट वी फील अवर इंस्टीट्यूट सेज। तो हम ये कहेंगे कि हमारा फॉर्मेट ये है, हम इस फॉर्मेट में ही देंगे, हम उनके हिसाब से सब कुछ नहीं करेंगे, हमारे हिसाब से वो बैंक वाला मानेगा। और कर रहे हैं सर, अब चालू हो गए। वी हैव बीन टॉकिंग इट ओवर फॉर लास्ट मोर देन 10 years, और अब सब लोगों ने वही सर्टिफिकेट के फॉर्मेट है जो 2-2.5 पेज के हैं, वही देना है सर अपन को। बैंकर चाहे कुछ भी कहे, मान लीजिए किसी का कोई स्पेसिफिक डाटा है, आप उसको एज पर एनेक्चर करें, आप उसको एज पर एनेक्चर करें, बट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट तो वो 2-2.5 पेज का ही है। गाइडेंस नोट फॉर रिपोर्ट्स एंड सर्टिफिकेट्स फॉर स्पेशल पर्पसेस, आप गूगल पे टाइप करेंगे आपको वो गाइडेंस नोट मिल जाएगा, और उसके अंदर 4 एनेक्शंस हैं, इलस्ट्रेशंस हैं, आप उसको कॉपी कीजिए और अपनी वर्डिंग के साथ चेंज कर लीजिए। कभी विनय जी बोलेंगे तो उसके ऊपर पूरा एक सेशन ले लेंगे, आधे घंटे का ले लेंगे। डन है।
Thank you. Subject to your availability, we definitely will look forward for your expert opinion. Thank you. Expert views. Thank you. I hope, friends, no more point in relation to issues matter and MDP and all this. So we have to say thanks to Pramodji for his valuable time. He always, I don't know what to say, even thanks to him. Whenever I request, he always does the call away. My pleasure. Thank you, Naresh. Thank you, Pramodji. Thanks for your deliberation and giving an lighting on the issue. Thank you very much. Thank you, everyone. Thank you. So, friends, now Satish is waiting for long. So, I'm not saying anything. Over to Satish, please. Thank you, Vinay ji, and good afternoon to all my friends. ऐसा है कि टैक्स ऑडिट से तो सारे फ्री हो ही गए हैं. अब टैक्स की टॉक ज्यादा हैवी नहीं करता मैं, बट व्हाटएवर न्यू थिंग्स हैव कम वो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ. एक तो ये है कि 197 सेक्शन है. देयर इज वन सेक्शन वेयर an assessee can apply for lower rate of taxation. Suppose rent पे 10% है, commission पे 5% है, तो one can file Form 13 and then the tax rate can be determined by the assessing officer on the basis of actual income and the tax due. Of course, it involves guesswork and all other things. अब उसके लिए government CBDT has issued a notification on 27th September, which is applicable from 1st October. These are the guidelines, and those guidelines are comprehensive. This is issued by DGIT systems, and this will be applicable and has to be applied through the Traces portal. और उसमें क्या है कि they have given procedure for assignment of application to the TDS officer, processing of the deductive request. All the procedures have been given. So this is for the information of all members that henceforth it is already after 1st October. This procedure has to be followed, and this is the SOP they have created for application of 197. Another notification they have come out with, which is for inventory valuation. They have prescribed the rules that also came on 27th September 23. As you are all aware that in this budget, a new provision was introduced that the assessing officer in certain cases, as he can get the special audit done after approval from the commissioner, giving opportunity to the assessee, he can also get inventory valuation done. Now for that, they have given the rules, and these rules have also been made effective immediately. Now, as of now, we have to leave it as it is because till date, inventory valuation exposure is not there. It is a new provision. Now, the third thing which came and which has been there for the last 4 months is regarding the change, which is very significant change in reporting for the trusts and other exempt institutions where the income is 5 crores and above. They have notified Form 10B and 10BB. I thought I must take some 5 to 10 minutes on this because I am regularly getting queries, and most of the queries as yet, I can explain to you, have not been addressed by the form or by the CBDT. They have extended the time period for filing the audit reports for 10, 11, 12 sections by 1 month as per the request of the Bombay Chartered Accountant Society, Chambers of Tax Consultants and others, that they should make it applicable from next year.
so that they can appreciate and also have sufficient time to get this from the chartered accountant. However, 1 month extension only has been provided, and now 31st October is the last date for furnishing of reports under 10B and 10BB. Now, friends, the report, I am now concentrating only on report in Form 10B for trusts whose income is above 5 crores. Now, they have introduced certain things which were not there, and this report is, which is to be certified by the chartered accountant, is much more comprehensive, much more rigorous than Form 3CD and any other reporting for ATIA, ATIB, etc. Because all the information pertaining to the trust is required to be certified by the chartered accountant. And many of the information in this audit report is not capable of furnishing the way the form is worded. So as yet, number of seminars have been held on this, but I find that most of the seminars have sidestepped these type of issues. Now, the first issue here is regarding PAN number, address, etc. in Form 10B, but the change here is that the assessing officer has to be given intimation, as there is a provision in the Companies Act that registrar of companies has to be given intimation if the books of account are not kept at the registered office of the company. Similarly, if the books of account of the trust are not kept at the registered office, then an intimation has to be given to the assessing officer, who is the jurisdictional assessing officer. And as yet, there is no format for online furnishing. It has to be filed in hard copy. And a copy of the board resolution, I mean the board of trustees resolution, has to be filed. And this has to be reported by the auditor. So therefore, it becomes the responsibility of the auditor to ensure that the books of account are kept at the registered office, or if it is not kept, then an intimation has been filed that has to be specifically reported by the auditor. Next issue here, which is difficult, quite difficult, is that you have to write all information which is factual. I am skipping. I am coming to only for those issues which are very cumbersome. Now in column number 14, you have to write details for books of accounts and other documents. Now, there are 18 codes which have been prescribed, 18 for the documents. And for each type of book of account and documents, code has been prescribed. Now, this is probably an exercise for standardization. All the trusts have not been subjected to audit like the Companies Act, where Schedule 3 prescribes the format for filing the or preparation of the company's balance sheets or annual accounts. Here there is no specific format, but about 6 months back, I don't recollect the exact date, a circular had been issued by the CBDT, probably in February, that the books of account should be capable of eliciting this information. Now, this is an exercise which has to be done for each trust where the income is above 5 crores, and most of the trusts do not have specialized accountants or specialized staff
and this notification had come in between the year. It had not come earlier. So this you all must ensure that a proper management representation is taken, that the information being filed here is in accordance with the information provided by the assessee, and as per him, this document is capable of providing the information as per the circular, which is going to be very subjective and it is going to be difficult, because whatever happens, the auditor is going to face the music, because the government in India is, especially in the last 7-8 years, have not withdrawn the exemption of trust, but any non-compliance, they have made it very harsh that the trust can lose the exemption. So if small mistake is there, for example, for registration, if somebody has done registration, provisional registration, he was supposed to intimate within 6 months. Now all this they extended till 30th September. That anybody who had got provisional registration in 21, when the original provision was enacted in the Act, because of the COVID, it went on giving extensions. But the permanent registration after obtaining provisional registration was required to be done within 6 months, but they extended this period to 30th September 23. And the consequences are, if this has not been done, then the trust loses its charity and all assets are subject to section 115 TTT. Now that harsh treatment is there. Then the information required is that all the trust deeds, you have to ensure that they comply with the, and this is mostly applicable to trusts which are doing any other object of general public utility. That is as proviso to section 215. Now, the auditor is to write that what are the objects, whether they are A, B, C, D, and what is the object which has to be defined as general public utility. And for that, he needs to go through in detail the projects, the results obtained of the projects, the third party evaluations. The auditor is supposed to certify that whatever the management is saying on this issue has to be correct. Now, all this information till date was not required to be given, and therefore there was no such record maintained by the firm. And then there is another clause column which requires that if any sub-grant or any payment above rupees 50 lakh to any single party during the year has been made towards application of income, then the particulars of that person have to be given. So this is basically to cross-check whether the receiver has reflected that in his receipts. Otherwise, reopening of income notice will come to that receiver. Then all the details regarding the corpus. So this form is so comprehensive that the balance sheet is not required, nothing is required. If this form is filled up properly, and also you have to give self-certification in yourself that you have not infringed on any of the provisions of the Act,
like no benefit to the specified persons. Now, definition of specified persons is difficult, where in some cases, so all this, I had a chance to go through one article written by a very senior person in Bombay who specializes in charities. So, as per him, the suggestion was that here the assessing may not give the correct information. So the auditor should give a disclaimer that all this is given, whether there is infringement or whether any benefit has been given to the specified persons or not, based on the information supplied by the assessee. Now, all these informations are required to be given. There is a requirement as per the tax audit report, disallowance under section 40A3, disallowance under section 40A1A, though there is no disallowance for the payment. The disallowance is that this amount will not be treated as application of income. So this audit report is very comprehensive and probably will require the chartered accountant to give lot of disclaimers, and then you have to yourself write. There is one section 115 BPI, like they do in tax audit report, whether this provision 56 to 10 is applicable, whether deemed dividend is applicable. So all these issues have been brought into this form. The auditor is supposed to give his judgment also and then certify that whether any service given to the trust gives any benefit. Now, the clause number 37, what it says, you have to write income deemed to be applied, income of earlier previous year up to 15% accumulated, corpus, borrowed fund, I mean everything. And then, friends, this is cross-linked to the new ITR trust form. Every information here has to be tallied with the information given in the form. If it does not tally, then your audit report is not correct or the form is not correct. So the precaution that is required to be taken is that the form and the audit report have to go hand in hand. Now, since probably the 10B form as yet has not been filed by most of the trusts, these things have not come to the fore. There was a big article in Economic Times just about 20 days ago when the extension was not provided, that many of the NGOs whose income was above 5 crores were even thinking of surrendering the status of charity rather than to comply with this detailed audit report. And this audit report again writes certain things that you have to dig out the record of previous years. And there is no limit provided. So one has to put a limit that we are furnishing this record only for this much. Detail of specified persons as per section 13(3). Settler or founder, even if not alive, details should be provided. PAN of each person to be filled. So all this is difficult, and who have donated any time in aggregate rupees 50,000. Any time in aggregate 50,000, that has to be given. Now, how this information can be furnished or is capable of being furnished, nobody knows. So I have just given a pointer, you can say a curtain raiser, to the type of questions
that the auditor and the trust have to answer, but all of us will have to go through in detail. Now, clause 43 says specified violation, yes or no. Trust has incurred any specified violation. There are 6 types of specified violations given here. Now you have to certify that the trust has not incurred any of these violations. Amount of depreciation claimed, which is now not allowable, they amended the act. Amount at section 269 SS, if that is applicable. Now you have to see each and every payment and receipt. There are thousands of payments and receipts for bigger trusts. Then section 269T, loan 20,000 above in cash. Then whether TDS, TCS provisions are applicable. So all these things require minimum, in my estimation, 1 week's time to fill up one return and audit report if the information is ready, which is unlikely to be ready in most of the cases since this is the first year. Now, friends, if you have any question on this issue, I can answer to the best of my ability. But if not, then we can proceed further for other issues. Satish ji, can you repeat कि we have to file for permanent registration? That date has been this over? Yes, that is over. That was 30th September 23. They have not extended that date. Now, if you had obtained provisional registration and you have commenced the activities, now it is not for those who had earlier obtained permanent registration. They are not required to reapply. It is only for those who had obtained provisional registration. And there are 2 circulars which are not very well in the realm of knowledge of most of the people, that in certain cases, due to technical difficulties, trust had applied for permanent registration, they were given certificate of provisional registration. And the circular states in such cases, it will be treated as a permanent registration because there were many number of cases. But for that, I would caution, we should file a communication online as also with the jurisdictional officer that we had applied for permanent registration in 21 when the first time it came into being. However, we have been given provisional registration certificate. So this is brought to your knowledge, and this is the circular which says that it will be treated as permanent registration. So therefore, this should be treated as permanent registration. और इसकी पेनल्टी बहुत जबरदस्त है अगर 30/9 तक नहीं किया तो पेनल्टी यही है कि चैरिटेबल ट्रस्ट का स्टेटस खत्म है. Could I proceed further, sir? Please go ahead, sir. Please go ahead. अब ऐसा है कि सर उस केस में ऐसा भी तो है ना, भले प्रोविजनल लिखा है लेकिन वो 5 इयर्स के लिए है परमानेंट अभी 5 इयर्स के लिए, प्रोविजनल होता तो 3 साल के लिए थी. हाँ बिल्कुल ठीक है, वो तो एक्ट में लिखा हुआ है ना. हाँ जी, जिन्हें प्रोविजनल लिखा है बट है मतलब वो 5 इयर्स के लिए, वो दैट इज डीम्ड टू बी परमानेंट. दैट इज अलवानी जी, मैंने अभी ही तो कहा कि बोर्ड का एक सर्कुलर आया हुआ है कि उन्होंने कहा कि टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से जिन्होंने परमानेंट के लिए अप्लाई किया था उनके सर्टिफिकेट के ऊपर प्रोविजनल लिख के आ गया गलती से, लेकिन हम उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते, इसलिए हमने एक जनरल सर्कुलर निकाल दिया. वो सर्कुलर 22 का है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस हो गए थे तो लोगों ने काफी उनसे कहा, तो ठीक हो ही नहीं पाया ऑनलाइन, तो उन्होंने कहा कि ठीक है जनरल सर्कुलर है, जिसने परमानेंट के लिए किया था इररिस्पेक्टिव उसमें प्रोविजनल लिखा है, इट विल बी ट्रीटेड एज परमानेंट. तो जो प्रोविजनल भी है उसको कमेंसमेंट के या 6 मंथ्स के वी हैव टू, जब 6 मंथ जिन्होंने नहीं किया उसके लिए 30 सितंबर कर दिया था ना. नहीं, 6 मंथ्स बिफोर 3 इयर्स होगा ना जी.
जो हमको अप्लाई करना है 6 जी। months बिफोर 3 years होगा ना, बिफोर, सॉरी, बिफोर एक्सपायरी ऑफ 3 years ऑफ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, यानी कि जो हमने नए अप्लाई किए फॉर 3 years, हाँ जी, उनको 3 years के मिला, ठीक। उनको रेगुलर के लिए जो अप्लाई करना है वो अभी करना है या 6 months प्रायर टू द एक्सपायरी ऑफ 3 years? प्रायर टू 6 months ना, लोगों के 6 month बीत चुके हैं, उसके लिए 30 सितंबर आगे किया गया। बहुत लोगों ने अप्लाई नहीं किया ना फॉर रेगुलर रजिस्ट्रेशन, वो उनके लिए किया गया। ट्रस्ट के अंदर मैं सिर्फ एक चीज बता सकता हूँ कि अपने आप में इतना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक कर दिया है। अगर कोई गौशाला चला रहा है या कोई इस तरह का काम कर रहा है तो वो गाय नहीं चराता, उसको चाहिए कि 3 इनकम टैक्स ऑफिसर अपने मेंबर बनाए, 2-3 चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाए और सारा दिन उसको समझाते रहे तो वो कंप्लाई भी कर सकता है, नहीं तो कंप्लाई भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो दूध भी बेचता है गौशाला में। वो एक्टिविटी इंसिडेंटल है टू द चैरिटी, बट अब दूध अपने घर में तो रख नहीं सकता। अब उसके लिए बड़ी परेशानी है। मेरे पास एक गौशाला का केस आया था बवाना से, तो मैंने हाथ जोड़ दिए थे। मैंने कहा भाई अब ये इस साल की रिपोर्ट तो हम नहीं कर सकते, बिना रिपोर्ट भरे आप फाइल कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो जिससे करा रहे हो उससे कराओ। मतलब इट इज रियली अ डिफिकल्ट थिंग। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी एक जजमेंट दे दिया है। गवर्नमेंट ने अपना काम तो कर लिया एक्ट में अमेंडमेंट करके। अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो जजमेंट आई थी 150 पेजेस की थी। उस जजमेंट में इन्होंने लिख दिया कि आज तक का जितना भी चैरिटेबल लॉ है दैट इज ऑल नॉट जीरो। उसमें ये था कि सिर्फ सोल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। फिर एक नोबल की दे दी सुप्रीम कोर्ट की। पहले ये था कि डोमिनेंट ऑब्जेक्ट है एंड यू आर क्लॉइंग बैक द मनी। अब अर्बन में बोल दिया कि 20% से ज्यादा आप अगर किसी चीज पे चार्ज करते हैं, इवन इफ इट इज इंसिडेंटल, या आपकी रिसीट्स 20% में ज्यादा है, तो यू विल लूज द कैरेक्टर ऑफ चैरिटी। तो इन नटशेल जिसमें इनकम ज्यादा हो जाएगी वो भी प्रॉब्लम में आएंगे, दे विल बी सब्जेक्ट टू स्क्रूटनी। यदि वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, हम तो लॉ डिस्कस कर रहे हैं। नहीं, वो तो गाइडलाइंस चेंज होती रहती हैं। नहीं अभी वो उन्होंने तो 5 करोड़ का इसीलिए तो बनाया है कि दे वो तो यही लिख रहे हैं। कॉन्सेंट्रेट ऑन 5 करोड़ ट्रस्ट। जी जी, वो स्क्रूटनी करेंगे, इसमें गलतियां निकालेंगे रिपोर्ट में। नहीं वो यही कह रहे हैं ना कि यदि आपने जरूरत से ज्यादा ओवर एंड अबव चार्जेस किए हैं तो इट मींस नॉट चैरिटेबल। आप उन्होंने बोला है कि इसका मतलब भी आपकी इंटेंशन वो नहीं है। तो व्हाट आई मीन इन दोज चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन वेयर इनकम इज मोर मच मोर प्रॉफिट आ रहा है, तो उसमें दे में क्वेश्चन है कि आप थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज कर रहे हो ना। नहीं, वहां पर 2 चीजें हैं, आपको ट्रस्ट के पूरे बारे में समझना पड़ेगा। ये सारी चीज उसी पे लागू होती है जो जनरल पब्लिक यूटिलिटी में आते हैं। जो मेडिकल है, जो एजुकेशन है, उनके ऊपर ये चीजें लागू नहीं होती। जो एजुकेशन है वो नोबल का केस है, ये अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का केस था। जैसे ये गवर्नमेंट ने डीडीए बना दिया, अर्बन अहमदाबाद में बना दिया, गवर्नमेंट ने अपने लिए अमेंडमेंट कर दी। व्हाट द गवर्नमेंट हैज डन, उन्होंने एक सेक्शन 46 से नया बना दिया। उन्होंने कह दिया कि जी हम जिसको नोटिफाई करेंगे उसकी एग्जेम्प्ट इनकम मानी जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को ओवरराइड कर दिया। जो प्राइवेट ट्रस्ट है वो मझधार में, क्योंकि आधे से ज्यादा लोगों को मालूम भी नहीं है कि उसका मीनिंग क्या है अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का। और आधे से ज्यादा जो डीड्स हैं वो बहुत पुरानी है, उसमें कई कुछ लिखा है। और नोबल का बिल्कुल ही नहीं पता, क्योंकि वो एजुकेशन के ऊपर है। उन्होंने तो यहाँ तक बोल दिया कि भाई अगर आप स्कूल की बसें चलाते हैं, आप किताबें बेचते हैं, यूनिफॉर्म बेचते हैं, तो आप जो है प्रॉफिटियरिंग कर रहे हैं। Sriji, sorry to interject. Let me take my proud privilege to welcome CA Genji, who is joining from Ahmedabad. Please, I mean, welcome, sir. Welcome. Thank you. Carry on, Sriji. Carry on, Sriji, please. I just came down from Rajasthan. ये मैं 5-10 मिनट और लगा देता हूँ। नहीं, आप पे पूरा टाइम है। आप पूरा टाइम लगाओ आपने। सीसी 5 करोड़ के लिए कॉर्पस भी इंक्लूड हो गया, विदाउट कॉर्पस है 10B और 10BB के लिए। 4% क्या मतलब? जो डोनेशन है, जो कॉर्पस आया है 10B और 10BB के लिए, जर्नल डोनेशन और कॉर्पस दोनों मिला के 5 करोड़ बनेगा।
नहीं, वो तो अलग अलग है ना, वो सेक्शन 10 में रजिस्टर है, वो सेक्शन 12 में रजिस्टर है। 10BB एप्लीकेबल है सेक्शन 10 के रजिस्ट्रेशन के लिए, वो एक्ट में अमेंडमेंट आ चुकी है कि आपको ऑप्शन नहीं है, अगर सेक्शन 10 में रजिस्टर्ड है तो फिर सेक्शन 12 की सरेंडर करनी पड़ेगी। नहीं 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 नहीं, वो सिंगल साहब का क्वेरी सर ये है कि जो 5 करोड़ की जो फिगर है वो कॉर्पस और नॉन कॉर्पस दोनों डोनेशन को मिलाकर के है या खाली वो कंकरेंट नॉन कॉर्पस वाली? दैट इज हिज इनकम के लिए है ना, इनकम के लिए, यस। इनकम की डेफिनेशन है। अब उसमें कॉर्पस की कंडीशंस दी हैं कि आपने कॉर्पस को कैसे यूज करना है, क्या करना है। वो जो आपको अगर उसको इनकम नहीं मानना तो एफडी करानी है, तो पुराने वाले में कोई इशू नहीं है। लेकिन जो नई कॉर्पस है उसके लिए तो उन्होंने डेफिनेशन दे दी है ना, दैट विल बी ट्रीटेड एज एग्जेम्प्ट ओनली इफ दोज कंडीशंस आर फुलफिल्ड। अदरवाइज फिर कॉर्पस कॉर्पस नहीं माना जाएगा, वो इनकम ही मानी जाएगी। नहीं, मैं सर उसके लिए कह रहा हूँ फॉर्म 10 और 10BB एप्लीकेबल होने के लिए। हाँ, वही तो मैं बता रहा हूँ आपको कि जो आपका कॉर्पस है वो तो एक तरह से कैपिटल हो गया। हाँ हाँ, आप उसमें से एप्लीकेशन ऑफ इनकम करते हैं, तो फिर आपकी उस एप्लीकेशन ऑफ इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से या तो आपने दोबारा उतना कॉर्पस बना दिया, ठीक है, नहीं तो फिर वो इनकम मान लिया जाएगा। मतलब पढ़ना पड़ेगा ना, सिंगल साहब क्या है केस टू कि केस डिफर करेगा। सर अगर अगर मेरा कॉर्पस 7 करोड़ रुपए का है और जनरल डोनेशन 3 करोड़ रुपए है, हाँ जी, तो उस केस में फॉर्म 10B एप्लीक होगा या 10BB होगा? नहीं, उसमें आपके केस में जो इनकम है वो तो 3 करोड़ ही मानी जाएगी ना। यस, ये प्रोवाइडेड कि आप 7 करोड़ कॉर्पस वाली जो आपकी कंडीशन है उसको मीट कर रहे हैं। यस, वो तो मैंने बोल ही दिया पहले। हाँ सर, ऐसा है, ट्रस्ट में बहुत कॉम्प्लिकेशंस कर दी गई हैं, जितनी ज्यादा करी गई हैं उसका कोई मतलब कोई हिसाब नहीं रख सकता। जैन साहब ही रख सकते हैं बस, अभी कुछ रह जाएगा तो जैन साहब बता देंगे। इतने कि सारे सारा सर दिन सुबह शाम हर बजट में नोटिफिकेशन या कुछ ना कुछ निकालते ही रहे ना जी, और वो इतने कलोनी ज्यादा निकाल दिए हैं। अब ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग केस है बॉम्बे हाईकोर्ट का, ग्रासिम इंडस्ट्रीज का। इसमें क्या फैक्ट्स थे, बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। व्हाई आई एम टेकिंग दिस बिफोर द हाउस इज कि ये बड़ा प्रैक्टिकल इशू है। इस केस में ग्रासिम ने एक स्पॉन्ज आयरन का प्लांट लगाने के लिए एक कंपनी बीटी, डेवी बीटी को एंगेज किया। दे पेड देम दी फीस, जो भी उसकी पेमेंट करी, एंड विद होल्डिंग टैक्स के बगैर वो पेमेंट नहीं हो पाई। उस समय टीडीएस वाले ने काट लिया कि नहीं, जैसे आजकल करते हैं कि नहीं जी हम तो 2% टीडीएस लेंगे लेंगे इररिस्पेक्टिव की ऑफशोर सप्लाई है, योर इनकम इज एग्जेप्ट। तो उसमें क्या हुआ, व्हाट दैट हैपेंड वाज कि उन्होंने 5-1 करोड़ रुपए का टैक्स टीडीएस काट लिया। अब अल्टीमेटली ये केस हाईकोर्ट में इसलिए पहुंचा कि वो जो फॉरेन कंपनी है उसने तो नेट ऑफ टैक्स बोला, ग्रॉसिंग आप करके पे करो, जो मर्जी करो। वो जो टीडीएस है वो ग्रासिम के बल्ले पड़ गया, क्योंकि उसने फॉरेन वाले ने तो अपना नेट ऑफ टैक्स लेके खत्म कर दिया। तो अब डिपार्टमेंट ने कहा कि भाई वो फॉरेन कंपनी पे करे, रिटर्न फाइल करे। ये डिटरमिन हो गया कि दैट इनकम विच दे हैव बीन रिमिटेड इज नॉट टैक्सेबल इन इंडिया। दैट द डिपार्टमेंट एग्रीड, बट द डिपार्टमेंट सेड कि ये जो है वो फॉरेन कंपनी नॉन रेजिडेंट इंडिया में रिटर्न फाइल करे और टीडीएस ले। वो फॉरेन कंपनी क्यों करेगी, वो तो उसने कहा हम नहीं करते। द मैटर वेंट अप टू दी हाईकोर्ट। तो हाईकोर्ट ने फिर जजमेंट दी कि टेक्निकल इश्यूज को साइड में रखो, पैसा तो ग्रासिम का है एंड ग्रासिम हैज मेड द पेमेंट व्हिच इज नॉट ड्यू टू द डिपार्टमेंट। तो उन्होंने फिर वो बोला कि दिस इज अनड्यू एनरिचमेंट, so therefore this money should be refunded to the trust. Now this is a standard practice, administrative practice. As per a daily, I can tell you, whenever you go for 197, the public sector undertakings insist whether the remittance is subject to TDS or not. They don't go by
the opinion of a CA or a professional. They want a certificate from the income tax department. And the income tax department, just to shore up their revenue collection from TDS, agreeing that it is not taxable, says no, we don't allow less than 2%, we don't allow less than 1%, or we are treating it as a PE. The person who is a joint venture partner, they make him the PE. Right or wrong? At that time, you don't have the patience to fight unless you want to go to the High Court. So what happens? They give a certificate where 1 or 2% is collected. And 90% of the time, in those cases, the department gets richer because the foreign party wants net of tax. They say you gross up and do whatever you want to do in India. As per the agreement, we want this much payment with us in our country. So 90% of them don't file the returns. The government becomes richer. So this is a case just to point out that. Now, another very interesting case I want to point out, which is a pointer of things to come, which is a very, very drastic judgment, which was carried as an article in Economic Times also. The judgment was delivered by Bombay ITAT. What had happened was that one of the persons who was searched twice, he admitted that he is engaged in manipulation of share prices and he has provided accommodation entries to so many people, etc., etc. So tribunal passed an order and directed the AO to collect the information from this gentleman about the accommodation provider and also the beneficiaries, and then take action within 90 days. Now, this judgment was in the case of Naresh Manaksan. Now, this is what has happened. Now, friends, I would not like to take more time. I have discussed whatever I wanted to. Now, let Vedji say something, and if there is any further requirement for me to join, I will be available. सर एक छोटा सा क्वेश्चन, काफी सारे सोसाइटी में हाँ जी बोलिए सर काफी सारी कॉलोनीज में मंदिर गुरुद्वारा हैं जिन्होंने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं लिया हुआ, उसके लिए क्या क्या सलाह देते हैं, क्या करना चाहिए? भाई देखिए, बात ये है कि रिलीजियस एक्टिविटी जो है, इनकम तो एग्जेम्प्ट है, और इसलिए जो इनकम एग्जेम्प्ट है वो एक्ट में ही अमेंडमेंट दी हुई है, मतलब प्रोविजन दिया हुआ है कि रिलीजियस एक्टिविटी में इनकम एग्जेम्प्ट है, उसमें कोई झगड़ा नहीं है। अब जो रजिस्ट्रेशन का इशू है, अब तो देखो सुप्रीम कोर्ट की बड़ी पुरानी जजमेंट है, एक एजुकेशन के नाम से अदर्यनाथ या आदित्यनाथ ट्रस्ट के नाम से वो सेक्शन 10 की एग्जेम्पशन लेते थे स्कूल में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप एग्जेम्पशन तो लेते हो लेकिन रिटर्न तो फाइल करो। अगर रिटर्न नहीं फाइल करोगे तो ऑफिसर को कैसे पता लगेगा कि एग्जेम्पशन है या नहीं। अभी मेरे पास 2 केस आए हुए हैं जिसमें 2 गुरुद्वारों के स्कूलों को, जिनका स्पेसिफिक पैन नंबर अलग था, 148 के नोटिस आए हुए। तो अब आप ये देख लो कि डिपार्टमेंट क्या करता है क्या नहीं करता, बिकॉज दे से योर इनकम इज एग्जेम्प्ट, पर हमें दिखाओ तो सही एग्जेम्प्ट कैसे है। अब वो गुरुद्वारे की इनकम से उन्होंने स्कूल चला दिया, ऐसे तो स्कूल चलाते रहते हैं ना गुरुद्वारे और ये जो और इंस्टीट्यूशन, उसका पैन नंबर अलग ले लिया, पैन के बेस पर उनको 148 का नोटिस आ गया कि भाई आपकी रिटर्न नहीं फाइल है, क्योंकि रिटर्न फाइल करना कंपलसरी हो गया ना। Thank you, sir. Thank you, Stishi. And it was a much sought after deliberation, and sensing the pulse of the members and the pulse of the times, Stishi deliberated nicely on 10, 10B and 10BB.
इट वाज समथिंग लाइक इट इज ए ऑनगोइंग। सर ये खत्म होने वाली एक ऐसी है कि जैसे वो कहते थे कि मारुति की एड में कि पेट्रोल खत्म होता ही नहीं, तो ये भी, इसका भी पेट्रोल खत्म नहीं हो रहा है चैरिटी का। 1023C है, 12 11 12 ऑल दैट वे, और ऊपर से ये अब 10B एंड 10BB फॉर्म, ऑडिट फॉर्म। बट दिस इज एंडलेस थॉट एंड एंडलेस proposition, and unlikely it will be settled in future, because चैरिटी सोसाइटीज ने भी मान लिया है कि हम ठीक सुधरेंगे नहीं, और सरकार ने भी ये मान लिया, शायद लगता है कि हम सुधार दें। लेकिन वो 5% है जो नहीं सुधरते, 95% को तंग किया जा रहा है। ये मैं बीच में बोल सकता हूँ। लेकिन सर वो ठीक है, लेकिन घुन के साथ में गेहूं भी पीस, वो सॉरी दाना भी पीस रहा, वो बात ठीक है, लेकिन घुन पीस अपरेंटली नजर आने लग रही है मैनी टाइम्स। बट हैविंग सेड सो, बिकॉज without going further, it is let's take the benefit of the presence of CA Bezenji, who has joined us from Ahmedabad. He is today in Ahmedabad and to attend the High Court proceeding in multiple cases. And moment after getting out, I mean, free from the hearings, he immediately joined. Thanks for sparing the time, sir. Thank you very much, and over to you. Unmute, sir. हाँ, वो बात कर, फोन कर दो। नहीं वो बात फोन पे बात कर रहे हैं सर। तो फिर आपकी मिस कॉल चली जाएगी ना। नहीं वो बात नहीं उनको पता है, वो मैं देख ही रहा हूँ कि वो फोन पे बात कर रहे हैं। क्या अदरवाइज मिस कॉल में है? वो पूछ लेना भी जब आ जाएंगे तब बात कर लेना, पूछ लेना। इस 10B और 10BB को रिवाइज करने की किसकी सलाह थी? ये फाइनेंस मिनिस्टर और वो सेक्रेटरी से पूछ सकते हो भाई, हमसे कैसे पूछ सकते हो? सिंगल साहब ये अप्रोच आपके पास है। क्वेश्चन था, ये ग्रीन पीस की सलाह पे हुआ है। ये देखो दिनेश जी को पता है। सर एक क्वेश्चन था। अंकित, तो जैसे कुछ शेयर्स हैं जो जिनकी ट्रेडिंग बाइंग सेलिंग ट्रेडिंग फ्रीज हो चुकी है, ILFS एग्जांपल है। हाँ जी सतीश जी, एक अंकित जी की क्वेरी बीच में, अंकित जी ने क्वेरी दी है सर। चलो क्वेरी ले लेते हैं। सर जैसे कुछ शेयर्स हैं, लिस्टेड शेयर्स हैं जिनकी ट्रेडिंग फ्रीज है, सस्पेंडेड है बाय सेबी, लेकिन शेयर्स अभी भी लिस्टेड है और डीमैट में। I lead to for airport, so just to say hello to all of you for that paper. अच्छा, अभी वापसी के फ्लाइट I just here for 5-10 minutes only. तो चलो आप 5-10 मिनट सर, ओवर टू यू। अंकित जी क्वेरी बाद में ले लेते हैं। ओवर टू यू सर प्लीज। तो रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू एंड joining, because I joined it just to make sure कि मैं मिस नहीं करूं मीटिंग को आज। तो ऑन मीटिंग ऑन कर रही, तो सतीश जी बता रहे थे। So good evening to all, each one, and I just got stuck up in the court hearing and got free just 15-20 half an hour back. Hopefully, बस मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया आज प्रोग्राम के अंदर। सतीश जी ने पूरा वो दे दिया, भाषण पूरा लगा के दे दिया इसके बाद। तो कोई अगर स्पेसिफिक वैसे तो टैक्स ऑडिट पूरा हो गया, सबकी जेब भरी हुई है, अब पॉकेट फुल है ना सबकी। अब तो कोई भी चुप हो गया, सबको सन्नाटा छा गया मेरे सवाल से। विनय जी हंस रहे हैं। वो इसलिए हंस रहा हूँ सर कि आदत बदलेगी थोड़ी ना, पैसे तो अभी आए ही नहीं है। की तो बात है, ये तो कह रहा हूँ। पैसे कहाँ गए ऑडिट फीस के? तो बता दो, टैक्स ऑडिट के 30 लाख ऑडिट किए तुमने। इनके पास किसी के पास भी पैसे नहीं आए। अरे भैया एक हिसाब लगाओ, 3.5 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट है, 1 लाख प्रैक्टिस में, 30 लाख ऑडिट हो गए, 30 ऑडिट पर हो गया, 1 लाख फीस हो तो 30 लाख रुपए का चेक आना चाहिए कम से कम एवरेज में। 1 लाख। आपको एक्सपर्टी असेसमेंट करनी तो ऐसी करेगा ना, किसी सीए की करनी हो। एक्सपर्टी तो ऐसे होगी। ये अब कब चुप हो गए? अब तो प्रश्न इतना आसान कर दिया ना, टेढ़े करते थे आप, आसान कर दिया आपकी बात। और बताओ क्या सुनना है, क्या सुनना है, क्या गपशप लगानी है? सतीश जी ने क्या क्वेश्चन पोस्ट किए हैं? कोई 5-7 मिनट है मेरे पास। हेलो हाँ जी, ये नहीं सुरेश गोयल जी। नहीं वो तो वेद जी मेरे को आप समझ आया है
कि ये जो गवर्नमेंट है वो सीए के पीछे क्यों पड़ी हुई है। सारी कैलकुलेशन आप दे आते तो इतना मल्टीप्लाई करके इतने पैसे पड़े हैं। फिर हमारे एडवोकेट को तो कोई हाथ नहीं लगाता। गांधी साहब, इंस्टीट्यूट का प्रेसिडेंट रहा हूँ, कोई मेरे को सीए वाला कहता है कि मेरे को सीए बन के क्या मिला, उसको समझाता हूँ क्या मिला। आप हमें तो हमारा डाटा पढ़ा दो, पर उनको ना पढ़ाओ सर। क्यों नहीं पढ़ाए? देखो मैं बीच में एक मिनट बोलता हूँ। मैं लोगों को रियलाइज कराता हूँ कि कोई सीए कहे मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। मैंने कहा भाई तू सीए कैसे आ गया, तू जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो है। हमारा इंस्टीट्यूट गारंटी करता है कि तुम्हें 6 लाख रुपए की साल की जॉब मिलती है गारंटीड मिनिमम नए वाले क्वालिफाइड को। तुम सब 15 साल 20 साल सब पुराने को सब कहते हैं कि नहीं जीएसटी में रजिस्टर्ड है। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। ये इकोनॉमिक टाइम्स में आई थी कि एक वकील के पास 18 या 19 लाख कैश मिला, एयरपोर्ट पे सील हो गया, छूट गया। वो तो छूट गया कि वो कह रहा था कि मैं एक सीनियर एडवोकेट को पैसे देने के लिए अपने क्लाइंट से कैश इकट्ठे लेके आया था। किसी ने उससे ये नहीं पूछा कि सीनियर एडवोकेट का नाम क्या है, किसी ने उससे ये नहीं पूछा कि सीनियर एडवोकेट कैश लेते हैं। ये रिपोर्टेड जजमेंट है, अभी आई है 3 महीने पहले। सर कह रहे हैं छूट गया, वो कैश छोड़ दिया उसको, एयरपोर्ट में पकड़ा था इनकम टैक्स वालों को। अभी आपकी इन्फॉर्मेशन बता दूं, पिछले हफ्ते मैंने रिट कराई है दिल्ली हाई कोर्ट में। सीए की सर्च करी थी, ये कह के कि ऑडिटर है। हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया कि कोई सर्च का कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा, सिर्फ ऑडिटर करके सर्च नहीं कर सकते। मैंने लास्ट टाइम कहा था ना वो रिट चल रही है। तो अच्छा होगा हाईकोर्ट ने सेटिस्फेक्शन नोट मंगा लिया। गवर्नमेंट के सीबीडीटी को दे दी ना जज। हाईकोर्ट ने सेटिस्फेक्शन नोट मंगा लिया और उसमें लिखा हुआ था from discrete inquiries it has come to that he has a knowledge about the undisclosed income of the so and so group. हाईकोर्ट ने कहा व्हाट इज ठीक है सर, ये तो बढ़िया डिसीजन आ गया। अभी आएगा, ये स्टे गारंटीड है ना, ऑर्डर तो पास हो गया। स्टे अभी तो अभी आर्गुमेंट डिपार्टमेंट को आना है, पॉइंट स्टे कर दिया ना प्रोसीडिंग को सारे को। सर इसकी साइटेशन बता दो सर। इसकी साइटेशन नहीं, ये इंटरिम ऑर्डर है, ये अभी इंटरिम ऑर्डर है। हाँ सर प्लीज आप अपने 10 मिनट तो ले लो सर। मैं तो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसीलिए पैसे कमाए। मैं तो ढूंढ रहा था कोई पैसे कमाए, चाहे तुम पिलाते नहीं हो बिल्कुल भी। अभी अजमानी जी ये कह रहे थे, अजमानी जी ये कह रहे थे कि वो मंदिर रजिस्टर्ड नहीं है कॉलोनियों के, सोसाइटियों के, उनका क्या करेंगे सोसाइटीज के अंदर? भाई देखो सिंपल सा रूल है, सरकार चैरिटेबल है, सरकार ये कहती है हमारा है, तुम्हारा क्या है इसमें। अभी वो सवाल पूछा हुआ था, सतीश जी ने कहा कि वो कॉर्पस मेरी भलाई में कहता हूँ कॉर्पस जोड़ गई मान के चलना 10B फॉर्म के लिए। क्यों सर? हाँ वो क्यों? कॉर्पस इज इनकम भाई। हु सेज कॉर्पस इज नॉट इनकम? कॉर्पस इज रिसीट सर, इज इनकम। डिस्प्यूट हुआ पीछे 10(3)(ab) की बात हो रही है ना, 1023(c)(ab) की। हाँ जजमेंट है, बहुत लड़ाई हुई है। मैंने क्या, मैं पंजाब हाई कोर्ट का, मेरा केस कोटेड है। ओके नहीं, opening corpus will You mean to say only the question is the law is very well settled. Income before exemption under section 11 and corpus get exempt under section 11 only 11(1)(d). नहीं opening corpus नहीं receipt during the year. Receipt during the year यार, opening का क्या मतलब? So you mean to say the entire corpus plus receipt on the see question is very, if you look at section 10 sorry 1024 sorry 224, income is defined where say voluntary any contribution received by charitable trust is an income including corpus. 11(1)(d) में जाके लिखा है with a specific direction. So therefore that has to be taken into account for the purposes of that 5 crore. Be conservative on that issue. Take a, because when you are planning, don't take a risky route. Okay. तो मुश्किल काम है 10B फॉर्म भरना है कंपेयर टू 10BB। हाँ मुश्किल तो है, और क्या दिक्कत है? इतनी सारी डिटेल मांगे, कहाँ से आएंगी डिटेल इतनी सारी? फीस नहीं मिलेगी जब आप भरोगे तो। कोई नहीं रहता यहाँ मन, बस यही तो प्रॉब्लम है। हाँ तो प्रॉब्लम तो है ही, इसमें तो कुछ फीस आती नहीं लेनी है, कहीं के बाद फीस फॉर्म छोटा भरता है। कोई किसी टेलर के यहाँ जाओ पैंट बनवाने के लिए, पैसे कम दे तो निक्कर बना के देता है क्या? वो तो निक्कर के पैसे में पैंट बना के देते हैं। फिर जितनी छोटे में तो पैसे डाल कोई और हाँ जेके साहब
ब्रजेश जी, ये डॉलर इतने बिखेर रखे हैं आपने पीछे, कल को कोई आ गया तो कौन पूछेगा आपको ये डॉलर ले? सर आप हैं तो आप भी आएंगे मेरी सपोर्ट के लिए सर। अरे कमाल हो गया, तुम डॉलर लिए बैठे हो, इतने पीछे डॉलर ही डॉलर दिखाए जा रहे हो, लोगों का मन खराब हो रहा है। सर इसमें खुश होना चाहिए, इंडिया नीड्स द डॉलर सर। सर एक क्वेश्चन ले लो सर। हाँ ले लो, ले लो, ले लो। एक संजय अरोड़ा जी का और एक जेके अग्रवाल जी का। जेके अग्रवाल जी सर पहले। हाँ जी सर, ये 1 अक्टूबर से न्यू टीसीएस रूल आए हैं। इसमें मेरा सवाल ये है कि जो ट्रेवल एजेंट है अपने कस्टमर का टीसीएस 20% डिडक्ट करेंगे, और फिर जब ट्रेवल एजेंट बाहर पेमेंट भेजेगा तो बैंक उसका 20% टीसीएस डिडक्ट करेंगे, यही सिस्टम है ना कुछ और भी है सर? भाई देखो, मैंने तो माइंड अप्लाई किया नहीं, अगर कोई और जवाब दे सके तो देख लो यार। लेकिन 20% टीसीएस एप्लीकेबल हो गया 1 अक्टूबर से, ये पक्का है। ये तो सर इसलिए है ना, क्योंकि जो फॉरेन ट्रेवल एजेंट की पेमेंट पे टीसीएस नहीं आना चाहिए, बट आई अंडरस्टैंड वो बिजनेस ट्रांजैक्शन का जो टीसीएस है वो उस पे टीसीएस नहीं आना चाहिए। एलआरएस वाला है, वन साइडेड के ट्रेवल एजेंट अपने कस्टमर का डिडक्ट करेगा, सिर्फ एलआरएस पे एप्लीकेबल है। The question is when you make payment to travel agent, then you are using LRS. Only applicable on LRS लिखा And हुआ है। when travel agent is making payment, he is sending remittance. कॉमर्स फिर तो आपका एक्सपोर्ट पे भी जाएगा और इंपोर्ट पे भी जाना चाहिए टीसीएस। जो इंपोर्ट करते हो, कोई सर्विस है, गुड्स इंपोर्ट करूंगा, उसमें टीसीएस थोड़ी है जी। तो इट मीन ट्रेवल एजेंट को अपने कस्टमर का काटना है, ट्रेवल एजेंट का बैंक नहीं काटेगा उसका। 195 में या तो वो 15 है, 15 वही जो वही लगेगा। जी। ओके संजय अरोड़ा जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जहां पर कॉर्पस फंड के डॉक्यूमेंट्स में एक बात बताओ, ये पूछा जाए हमने टाई क्यों नहीं लगा रखी? क्योंकि आपने फ्लाइट पकड़नी है इसलिए। नहीं, हाई कोर्ट में जरूरत नहीं है। मैं पूछ रहा था, टाई मेरे हाथ में नहीं थी, मेरे हाथ में ये वो एडवोकेट वाला था, मतलब सीए वाला प्लेटफॉर्म एडवोकेट वाला लगाना ठीक नहीं। एडवोकेट की जरूरत नहीं है। नहीं मेरे हाथ में था ये, मैं दिखाने के लिए मैं लगा रखा था। मैंने कहा बात ये हम ऐसी जगह पे क्यों हाथ फेरेंगे कि बिना बाद में कल आप उसको रिवर्ट करोगे, पता लगेगा हमने कह दिया तूने लगा रखी है क्या। मैंने इसकी छेड़ा कि आपकी टाई कहाँ है? नहीं, आपने पूछा ना। मैं कह के थक गया, कोई पहचानने से सड़क पे इनकार कर देगा, मीटिंग में बिना टाई लगाया हूँ। ये मेरी रिक्वेस्ट है, और मेरा ये कह दूं कि मैं एज ए पास्ट प्रेसिडेंट इतनी हिम्मत करता हूँ। अब कोविड चला गया, मीटिंग ऑफिशियल है। संजय अरोड़ा जी। हाँ जी चलिए सर, क्वेश्चन ये है कि कॉर्पस फंड के साथ अगर कंडीशंस रिवील करती है कि जो भी इनकम जनरेट करेगी वो भी पार्ट ऑफ कॉर्पस फंड होगा, तो क्या वो उसके इसके अंदर जो इनकम ड्यूरिंग द ईयर जनरेट होती है? अब यार इनकम है, इट इज एन इनकम, यू कैन नॉट से इट इज नॉट इनकम। ओनली इनकम इज exempt, exemption is when you fulfill the condition, what you receive is an income. सर प्रोविजंस में भी है, अगर वो अपना फंड के बेसिक कंडीशंस में है कि अगर वो प्रिवेलिंग कंडीशंस ही है फंड की कि जिससे जो इनकम जनरेट करेगी, तो लॉ भी इसको अलाउ करता है कि उसको हम कॉर्पस फंड ट्रीट करें? Any something I could not get you. सर सेक्शन भी मेरे को चेक करना पड़ेगा, सेक्शन भी प्रोवाइड करता है अगर कोई इनकम जनरेट होती है और वो कॉर्पस फंड के से ही जनरेट हो रही है, और जो कॉर्पस फंड जनरेट का डीड है या ट्रस्ट, वो अपना उसका जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो अलाउ करता है कि उस इनकम को पार्ट ऑफ कॉर्पस फंड ही माना जाए, तो फिर इसको एज ए इनकम ट्रीट ना करके कॉर्पस फंड माना जाएगा। आपका क्या क्वेश्चन है? हाँ सर, क्या उस केस में सर फिर वो कॉर्पस फंड ही माना जाएगा ना सर? नहीं माना जाएगा। You cannot override that, भाई। Any donation received with a specific direction, it will form part of the corpus is exempt, subject to fulfill condition. But income arising from this such corpus, if you provide interest rate, फिर तो किसी को खर्चा करने की जरूरत ही नहीं। 100 करोड़ रुपए कॉर्पस में लेके बैठ जाए, एफडी बना ले, 8 करोड़ रुपए साल का आएगा जी, मैं तो कॉर्पस का पार्ट बनेगा, बढ़ती रहेगी, ना टैक्स देना ना चैरिटी करना। Am I right? Yes, correct. I think this answers your question. अंकित जी। सर मेरा गुड इवनिंग सर। अंकित, अच्छा हाँ ठीक है, जुमानी जी ले लो। सर यदि पार्टनरशिप फर्म में मुझे सैलरी मिल रहा है तो मैं उसके अगेंस्ट एक्सपेंसेस क्लेम कर सकता हूँ? कर सकते हैं जो डायरेक्टली रिलेटेड है।
एक काम मैं जरा एग्जिट कर दूं, थोड़ा सा मुझे निकलना होगा थोड़ा सा। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू जैन साहब, एंड ऑलराइट, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर गुड ट्रैवलिंग। थैंक यू सर। हाँ जी, अजमानी साहब का जो क्वेश्चन है वो सतीश जी आप ले लीजिए। हाँ जी बोलिए, क्या क्वेश्चन है? सर जैसे मेरे को पार्टनरशिप में सैलरी मिल रहा है और प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है, और एज पर दी पार्टनरशिप डीड, एज पर पार्टनरशिप डीड, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि मैं अपनी गाड़ी यूज कर रहा हूँ जो मेरे नाम पे गाड़ी है, उसको मैं अर्न करने के लिए मैं जाता हूँ ऑफिस के काम पे जाता हूँ, तो क्या मैं उसके अगेंस्ट डेप्रिसिएशन, कार एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन कार लोन क्लेम कर सकता हूँ अगेंस्ट द रेमुनरेशन ऑफ फ्रॉम फर्म 28(5) के अंदर? देखिए अगर आपने, मैं जनरल सवाल का जवाब दे रहा हूँ, फिर मैं आपको केस लॉ भी बता दूंगा कि अगर आप अपनी गाड़ी मेंटेन करते हैं, उसका खर्चा दिखा सकते हैं, और आप ये नेक्सस शो कर सकते हैं कि दिस आई एम डूइंग फॉर अर्निंग माय सैलरी, आई एम गोइंग देयर, आई एम अटेंडिंग ऑफिस, तो बिल्कुल कर सकते हैं। बिजनेस एंड प्रोफेशन में सैलरी का वो आपके पास आएगा, एग्जाम्प्ट इनकम का केस तो आएगा नहीं, वो तो 14 लग जाएगा। बट अगर आप सैलरी ले रहे हैं विच इज टैक्स अंडर द हेड बिजनेस और प्रोफेशन, तो उसके हिसाब से आपको खर्चा मिल जाएगा। दैट केस जो प्रॉफिट भी आ रहा है मेरे को प्रोपोर्शनेट लेना पड़ेगा या मैं टोटल अगेंस्ट? हाँ बस ये सवाल आपका ठीक है ना, इसीलिए तो मैंने आपसे वो बोला एग्जेम्पशन 14A का ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब तो आपको फिर लॉग बुक रखनी पड़ेगी या कोई सिस्टम रखना पड़ेगा, क्योंकि अब ये ऐसी एडिशंस होती नहीं है, लेकिन आप बता दोगे। मेरे को सैलरी आई, प्रॉफिट आया, दैट इज KPMG में पार्टनर हूँ, मोर देन 2 करोड़ रुपया मतलब प्रॉफिट आया और सैलरी उन्होंने डाला हुआ 1% का, तो इस केस में टैक्सेबल भी हो गया 50 लाख और 1 करोड़ 50 लाख हो गया एग्जाम्प्ट प्रॉफिट। तो फिर उसी प्रोपोर्शन में कर ले अगर बचना है एलोकेशन। सेकेंडली मैं आपको एक केस लॉ दे देता हूँ, ये शशि भूषण का है। शशि भूषण जो बहुत फेमस हमारे वो लॉयर थे, फिर वो लॉ मिनिस्टर बने, इंदिरा गांधी का केस जिन्होंने फाइट किया, प्रशांत भूषण के फादर। ये केस 10 साल पुराना है। इस केस में हाई कोर्ट में गया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उन्होंने हार्ट का बाईपास कराया था। ये सर एक्सपेंसेस क्लेम किए थे, है जी, उसके एक्सपेंसेस क्लेम किए थे जो हाँ डिसअलाउड उसने उन्होंने एक्सपेंसेस क्लेम किए थे। हाँ। तो हाई कोर्ट ने कहा, उसमें रेशो से मैं आपको डिसीजन बता रहा हूँ, उसने कहा कि भाई ये पर्सनल एसेट है, ये इस्तेमाल होता है। उसने कहा जी मेरा ये एसेट है, इसीलिए मैं कर पा रहा हूँ प्रैक्टिस, इसीलिए मैं जा रहा हूँ, मेरा हार्ट ही काम नहीं करेगा तो मैं काम कैसे करूंगा। तो हाई कोर्ट ने फिर उस समय ले डाउन करा था कि भाई ये चीजें नहीं मानी जाएंगी, जो आपकी चीजें आप नेक्सस प्रूव कर सको, वो तो आपकी बॉडी का है, बॉडी को केयर करने के लिए मेडिकल है। अब मेडिकल जो है, आप जानते हैं कि कंपनीज एक्ट में डायरेक्टर को अगर बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर दिया जाए, कुछ कर दिया जाए, दैट मैन इज ए की मैन, जैसे की मैन पॉलिसी का लोगों ने फायदा उठाया था, ऐसे ही मेडिकल में अगर आप पास करें एंड यू कैन शो दैट विदाउट दिस पर्सन द बिजनेस कुड नॉट बी रन, तो आपको मेडिकल एक्सपेंसेस मिल जाते हैं। लेकिन उसमें इंडिविजुअल था इसलिए नहीं मिले। तो आप इंडिविजुअल हैं, तो आपका अगर इस तरीके से आप नेक्सस प्रूव कर देंगे तो मिल जाएगा। आई कैन टेल यू केस ऑफ एन एमपी। मेरे पास एक एमपी का केस था, नो ही इज नॉट अलाइव टुडे। तो वो क्या करता था, उस समय बड़ा इशू होता था गाड़ी का कि 400 रुपए लगेंगे, 800 रुपए लगेंगे। वो 20% 400 में से 100 रुपए ना कंपनी को रिमबर्स कर देते कि मेरा पर्सनल यूज ना लगे। तो आप उस तरीके से एग्जामिशन के हिसाब से ले सकते हैं, एक्ट में कोई प्रोहिबिशन थोड़ी है। अजमानी साहब आप आपको अनम्यूट करने प्लीज, अजमानी साहब अनम्यूट करें। सर यदि कार डायरेक्टर या पार्टनर के नाम है और वो कंपनी में या फर्म में एज ए असेट हम दिखा लेते हैं, फिक्स असेट्स, तो हमको डेप्रिसिएशन लेने में या जो पार्टनर इन लोन तो पार्टनर डायरेक्टर के नाम है, कंपनी उसको रीइंबर्स कर रही है, तो क्या हमें इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन में प्रॉब्लम हो सकता है? देखिए ऐसा है कि आपने आंसर खुद ही दे दिया, प्रॉब्लम है
तभी इस तरह के बहुत सारे केसेस कोर्ट्स में गए हैं और कोर्ट्स ने अलाउ कर दिया है, बट दिस इज नॉट ए गुड प्रैक्टिस। ये है कि आपके नाम पे नहीं है, आप ये कह रहे हैं जी बेनिफिशियल ओनरशिप कंपनी की है, यूजर बाय द कंपनी है, कंपनी पे कर रही है, तो देयरफॉर डेप्रिसिएशन शुड बी अलाउड। तो स्ट्रिक्टली गोइंग ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो कोर्ट्स ने अलाउ किया है, बहुत सारे केसेस है डिसाइडेड। बट आप ये कहें कि प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो खड़ी हो सकती है, बिकॉज द ओनरशिप इज नॉट बाय एनी इनवॉइस और एनी एविडेंस अदर देन द एक्शन कि मैंने बैलेंस शीट में दिखा दिया, दैट्स ऑल। उसमें अब तो सर ये कंपनी के बैलेंस नेम शीट में भी में क्लोज अलग आ गया है प्रॉब्लम ना। आता है ना, कमर्शियल श्रीज नेम जी मेरा एक लेना। क्वेश्चन है। हेलो, बोलो हाँ जी, श्रीज जी, बोलो श्रीज सर। मेरा एक क्वेश्चन है। सर्च हुई अक्टूबर 19 में। हाँ जी, हेलो, हाँ अक्टूबर जी, हाँ 19 जी, से बोलो। 153 अक्टूबर 19 में सर्च हुई, अक्टूबर 19 से 153C कितने साल के लिए इशू हो सकता है? अक्टूबर 19 के जो हो सकते हैं 6+1 हो सकते हैं सर। और एक सेकेंड, लेट मी कंप्लीट। पीछे वाले मतलब 1 तो वो साल 2021 और उसके पिछले 6। 6 साल हो सकते हैं पिछले। हाँ जी, लेकिन डिपार्टमेंट का व्यू है, मेरे पास भी 2 केस आए ऐसे, अगर 50 लाख से ज्यादा उससे पिछले 4 सालों में है, उनके हिसाब से कोई मटेरियल फुल फिगर वाली है, एज फार एज दी थर्ड पर्सन इज कंसर्न, तो वो 10 साल इसे के क्या देखें, हैं, इसे जो कि देखिए। मेरे हिसाब से हाँ। फार फेच्ड है। लेकिन ऐसा कर रहे हैं, मेरे को भी 2 नोटिस 2 सीए ने डिस्कस किए हैं। नहीं, वो तो उस केस में है ना जहाँ 1/4/21 के बाद सर्च हुई हो। अगर 19 में हुई, अक्टूबर 19 में, तो 6 साल ही होने चाहिए मेरे ख्याल से। तो हाँ, 6 ही होने चाहिए भाई साहब। 6 ये साल होने सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दी थी ना कि 153C में कि जस्टिस शाह ने कि जो अमेंडमेंट आई थी परटेनिंग टू और बिलोंगिंग टू, वो रेट्रोस्पेक्टिव है, पुरानी असेसमेंट्स भी खोल सकते हो आप। वो उसी के मगर लगे हुए हैं कि भाई ये 10 साल आ गया है तो पुराना भी चल रहा है। मैं तो खुद आपको बता दिया है कि लॉ के हिसाब से 6+1 है, लेकिन वो इंटरप्रिटेशन 10 की ले रहे। एडमिनिस्ट्रेटिवली उनको कोई रोक नहीं रहा, या तो आप फिर कोर्ट में चैलेंज करो रिट में, या फिर अगर वो मान जाए तो मान जाए। मैंने वैसे एक फाइल करवाया है ड्रॉपिंग के लिए बिफोर द सेंट्रल सर्कल सीआईटी, अब देखो क्या करता हूँ। क्योंकि आपने जो सवाल पूछा, बल्कि मैंने 4 दिन पहले ही भुगता है, एक सीए आए थे तो मैंने इमीडिएटली स्टडी किया, तो मुझे भी लगा ये गलत है। फिर ऑफिसर से बात हुई, कहता जी हमारा व्यू ये है कि 50 लाख से ज्यादा है तो वो जो अमेंडमेंट बाद में आई है यहाँ भी अप्लाई करेगी। ठीक है भाई, तुम तो फिर जो 50 लाख ईच ईयर में होना चाहिए ना, ईच ईयर में। क्या चीज 50 लाख जो है हर साल में होना चाहिए ना, हर ईच ईयर साल में, हर साल में। जिस ईयर में नहीं है, ऐसा है, ये सारी चीज वो देखते नहीं है, आप राइटिंग में लिख के दीजिए। मेरे हिसाब से 6+1 से ज्यादा नहीं होता ठीक लॉ के हिसाब से। नहीं, जी वो ये उनका एक व्यू ये भी है कि मान लो सपोज तो उन्होंने 6 साल का खोल दिया, उसमें 6 साल में 3 साल तो 50 लाख से ऊपर है और 3 साल में 50 लाख से नीचे है। तो जब 3 साल में 50 लाख से नीचे है तो उसमें 3 साल में 3 साल वाली कंडीशन ही लगेगी, 10 साल वाली नहीं लग सकती। मैंने जी और भी ऐड कर देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है सिंगत टेक्निकल यूनिवर्सिटी, और 2014 में एक्ट में अमेंडमेंट भी आ गई थी कि सिर्फ उसी साल में 153C करना है जिस साल में इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल सजेस्टिंग स्टेटमेंट ऑफ इनकम ऑफ सच अदर पर्सन है। लेकिन ये सारा कर लेते हैं। हमारे 2 केसेस में हाई कोर्ट से, दिल्ली हाई कोर्ट से हमने स्टे लिया, फाइनल ऑर्डर पास नहीं किया उन्होंने, वेयर देयर इज नो इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल टू दैट ईयर। हाई कोर्ट ने फर्स्ट हेयरिंग में स्टे दे दिया, लेकिन डिपार्टमेंट तो फिर अपना लड़ता ही है, रिजॉइंडर फाइल कर रहा है, ये कर रहा है। बट मोस्ट लाइकली वो सिंगल टेक्निकल यूनिवर्सिटी को दिल्ली हाईकोर्ट अप्लाई करेगा। तो नॉट ओनली 6+1 विद द राइडर, ओनली इन सच ईयर वेयर देयर इज इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल। सर लिबरलाइज स्कीम में यदि मैं $50,000 $1 लाख ओवरसीज रखना चाहूँ तो मुझे प्रॉब्लम है कुछ?
ये तो आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ेगी एज पर फेमा, रख सकते हैं 2,50,000 का जो हमारे को अप्रूवल है ना ऑटोमेटिक लिबरलाइज स्कीम में। नहीं सर, उसमें ऐसा नहीं, नहीं नहीं, है, नहीं, नहीं, गलत नहीं, फहमी है नहीं, बहुत नहीं। लोगों को। एलआरएस में मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, अगर आप बारीकी में जाएंगे तो बहुत सारी ट्रांजैक्शंस करंट अकाउंट की हैं, बहुत सारी ट्रांजैक्शन कैपिटल अकाउंट की हैं, बड़े इफ्स एंड बट्स हैं, और अभी 3 महीने पहले इन्होंने बड़ी अमेंडमेंट्स करी हैं उसमें। तो अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं विच इज कवर्ड इन एलआरएस तो फिर ठीक है, अदरवाइज यू हैव टू टेक द परमिशन। अब नहीं, एलआरएस सर, थोड़ा वाइड है। एक मिनट, एक मिनट। देखिए, पहली बात तो एलआरएस इज इन रिलेशन टू रेमिटेंस, नॉट टू कीप द बैलेंस एंड फॉरेन करेंसी विद यू। As far as the foreign currency is concerned, it is separately governed by the RBI norms, which suggests 2 points. One is for the business class, other is for the non-business class. So for non-business class, you cannot keep any foreign currency for more than 15 days. That too, which has been issued, which been you had got it issued from the authorized dealer, that is AD. For a specific purpose, after making use, you have to remit back to the bank. That is the AD. सर मुझे अब बाहर से रेंट आ रहा है, दुबई से रेंट आ रहा है, क्या मैं वही बाहर रिटेन में रख सकता हूँ? रेंट तो आपको बैंक से आ रहा होगा ना सर? नहीं नहीं, मेरे को जैसे बाहर मैं कहना रिटेन ओवरसीज या मुझे इंडिया में वापस लाना ही पड़ेगा? आपको लाना ही पड़ेगा, नहीं तो वहां पे फॉरेन करेंसी फॉरेन एसेट्स में दिखाओ ना, फिर वहां पे कैसे दिया आपने फॉरेन करेंसी में, आपने रिटर्न में दिखाओगे ना एफए के अंदर। रेंट मिल रहा है ना वहां से, प्रेमिसेस से रेंट मिल रहा है प्रॉपरली। भाई वो एफए में दिखाओगे ना, आप अपने रिटर्न में कहाँ दिखाओगे, पैसा कहाँ पर है आपके पास? वो बैंक में दिखा देंगे हम, जैसे हमने फिक्स असेट्स दिखाई। विनय ये फेमा का सब्जेक्ट है, इसको ऐसे जनरल कैसे रिप्लाई कर सकते हो? इसको रिप्लाई करना ठीक नहीं है। अंकित जी, सर एक वो क्वेरी है, जैसे जो लिस्टेड शेयर्स हैं जिनकी सेबी ने ट्रेडिंग सस्पेंड कर दी है और डीमैट में वो शेयर्स अभी भी आते हैं लेकिन ट्रेडिंग में एनए आता है, एग्जांपल इसका आईएलएफएस शेयर है, तो इसका कैपिटल लॉस कैसे क्लेम करे? क्योंकि ओनरशिप तो आज भी है, राइट तो आज भी है, क्या इसको नॉमिनल एक 5,000 10,000 कैश में सेल करके कैपिटल लॉस ले ले? देखो ऐसा है कि इसके ऊपर बोर्ड का सर्कुलर है विच इज वेरी स्ट्रिक्ट, उसके हिसाब से जब तक आप सेल नहीं दिखाओगे यू कैन नॉट क्लेम लॉस, आप राइट ऑफ नहीं कर सकते। तो सर नॉमिनल एक नॉमिनल कैश सेल कर दें ऐसे उसको कि इस शेयर पे जब भी कुछ होगा बाद में राइट होगा तो सामने वाले का राइट है, ऑफ मार्केट सेल इसके बारे में नहीं जानता, बट इफ द ट्रेडिंग इज सस्पेंडेड then naturally you cannot sell it in the market, you have to sell it off market. अब ऑफ मार्केट सेल करेंगे तो you can prove that the person who buys उसके लिए इसकी वैल्यू है। जब कोई चीज ट्रेड ही नहीं हो रही और जो चीज किसी चीज की वैल्यू ही नहीं है तो अगला रद्दी क्यों खरीद रहा है? तो मतलब वहीं पर क्वेश्चन आना शुरू हो जाएंगे ना। आपका जो प्रैक्टिकल अप्रोच है वो ठीक है, बट फिर कोई इस चीज पे आ जाए, इन चक्करों में पढ़ना शुरू हो जाए, तो आप सर्कुलर पढ़ लो। मुझे सर्कुलर पूरा याद नहीं है, बट दैट सर्कुलर इज देयर। आपको पता होगा शायद उस सर्कुलर का, अंकित जी पता है? सर आपने कहा सर्कुलर पढ़ लूंगा, सर्कुलर याद नहीं, वो सर्कुलर में देख लेता हूँ। आगे वाला क्वेश्चन आपका मुझे कट गया था। हेलो, हाँ जी, हाँ सर आपने कहा सर्कुलर मैं पढ़ लूँ पूरा, उसके बाद जो आपने कहा वो कट गया था एक्चुअली। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि सर्कुलर मैं आपको भेज दूंगा, पढ़ लेना। दैट सर्कुलर इज ऑलरेडी देयर बाय सीटीटी। एक्चुअली पता क्या है, बहुत सारे सर्कुलर, अब मैं ये ट्रस्ट की ऑडिट रिपोर्ट बनाने लगा था तो 1974 के खोलने पड़े, 1978 के खोलने पड़े, 1969 के खोलने पड़े। ये तो शुक्र है कि सीबीडीटी ने उन सर्कुलर्स को रिवाइज नहीं किया, दे वर बेनिफिशियल सर्कुलर्स। अब क्या है, बहुत सारी चीजें इन्होंने ऐसी कर दी हैं, जिन्होंने करी है उनको खुद नहीं पता हम क्या कर रहे हैं, बस कर रहे हैं कि झगड़ना है, हर्डल रेस क्रिएट करनी है 400 मीटर की, तो उसमें 4 हर्डल तो आनी चाहिए, तो उसमें से 2 हर्डल ऑडिटर को आएंगी और 2 हर्डल एसएससी को आएंगी, डिपार्टमेंट को कोई हर्डल नहीं होनी चाहिए। द बेसिक पर्पस इज दैट एवरी इंफॉर्मेशन शुड बी रेडीमेड, कुक्ड एंड एज पर दी परफेक्शन, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। बट एनीवे, अब ये तो है जो, देखो क्या होता है, इंस्टीट्यूट को मेरे को भूल गया बोलना, और मोदी को बोलना था कि इतने नोट्स निकालते हैं, इसका भी गाइडेंस नोट निकालें, हर रोज नया नोट निकाल देते हैं। टैक्स ऑडिट का 2022 की जगह 23 का
दोबारा 350 बेच कर निकाल दिया। और ये इतनी ड्रास्टिक चीज है, 1 महीना एक्सटेंड हो गया, अभी तक निकाला नहीं। इसका भी तो गाइडेंस नोट निकाले ताकि हम लोगों को पता लगे व्हाट डज दी मीनिंग ऑफ वॉट एवर टर्म्स आर यूज। अगर आप पढ़ेंगे तो यू विल फाइंड मेनी ऑफ द टर्म्स आर नॉट केपेबल ऑफ प्रॉपर रीजनिंग। पता ही लगता क्या कहना चाहते हैं। विनय जी, शुड बी वाइंड अप? सर ये CSR कंट्रीब्यूशन 80G के लिए क्वालिफाई करेगा? सॉरी सर, क्या बोल रहे हैं? CSR कंट्रीब्यूशन विल क्वालिफाई फॉर 80G हाँ, की डिडक्शन के लिए? हाँ बिल्कुल, वो तो डिसाइडेड केस लॉ है भाई। हाँ डेफिनेटली जितने भी इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं वो अपना डेडिकेटेड फाउंडेशन बनाते हैं और अपनी कंपनी से जो उसके अंदर वो क्या है रिस्ट्रिक्शन है वो एक्सपेंस नहीं माना जाएगा। हाँ, एक्सपेंस नहीं माना जाएगा, बिजनेस एक्सपेंस नहीं माना जाएगा। वो बोर्ड का सर्कुलर है ना वो। हाँ, इसके अलावा 16-17 से है, 15-16 से है, वो एक्सपेंस नहीं होगा। इसके अलावा नहीं माना जाएगा। इसके अलावा उसी के अंदर सेक्शन 80G में है 2 जगह, अगर आप डोनेशन देते हैं वहां से कंट्रीब्यूशन देते हैं तो वहां पे भी CSR के थ्रू दे रहे हैं तो उसका 80G आपको नहीं मिलेगा। एक तो दो स्पेसिफिक फंड है उसके अंदर, 2 स्पेसिफिक फंड है, 2 स्पेसिफिक है, उसके अलावा सब में मिलेगा। यस केस लॉ देयर टू सपोर्ट यू। केस लॉ यस देयर, क्योंकि मैंने 3-3 की असेसमेंट करवाई थी, केस लॉ वगैरह सब कुछ दिया था, पूरी डिटेल दी थी, लेकिन वो एडिशन हो गया कि CIT अपील फाइल करेंगे ना, फिर करनी चाहिए। तो ठीक है ना, वो जैन साहब चले गए बताते हैं ना कि 1 लाख रुपए की तो आपकी आमदनी मिनिमम फीस हो गई आपकी अपील करनी है। नहीं, ऐसे क्लाइंट का केस है, 1 लाख रुपए बड़े आराम से दे देंगे वो। हाँ, तो फिर अगली बार जैन साहब कह देंगे अगली बार वो अभी चाय का बंदोबस्त कर रहे हैं तो आप होस्ट हो गए हैं इसमें। पक्का पक्का। भाई सारा काम वकीलों के लिए। विनय जी, बलवान को बोले चाय और समोसों के लिए नहीं, अगले महीने बोलना है। सर वो बलवान के लिए इश्यू क्या हो रहा है कि वो वहां पे नहीं होगा, ये कहीं हम अलग से हमें करना पड़ेगा लोकेशन लेकर के, वो जगह तो नहीं रही। So friends, I suppose we should close. Yes, sure. So friends, thank you very much. Thanks to the speaker, एक query और है बस। speaker, CA Vedyan ji, Satish Agarwal ji, in absentia CA Gautam, Gaurav Gupta ji, and friends, thanks you all in attending in large number. Thank you very much, and we'll be looking forward to see you in the month of November again. And by that time, all the best. Have your jolly time. File your return, pay taxes, enjoy your sleep, and have your good health. Thank you. All the best. Thank you very much.